communicate with you all and uh, to tell you a answer to a very simple question. Is there a formula that can be used by any investor investing in stock markets to make money? Is there a sure shot formula of making money? That is what I will try to communicate today. Once. And with me, I will have my friend, philosopher, guide, well-wisher, and someone you all know very well, Mr. Romit Parat. Uh, Dada, you want to start with your thoughts and then you want me to come in? Absolutely. Because I'm very excited because whenever I get a chance to speak, I don't stop myself. So, good evening and everybody, and welcome to a very, very interesting sessions because क्या होता है कि all of us we meet every day almost on our training sessions and we talk and I'm trying to create a very big community of alternate investments in India and there is a saying that when you want it, the entire world conspired to give it, and everything is falling in line. And is Sujit Nair there? Sujit sir, I think when you spoke the other day about the participation of the industry, हो सकता है कि सिद्धिविनायक महाराज ने सुन लिया होगा. Because the other day I was on a work with APME, and incidentally we had to go to regulator's office to introduce on certain things, and there was a very, very interesting discussions which happened. The idea was, is anything being done on the distribution side of the business? I know there are some few clients here who are sitting, but again, it is always good a platform to understand that this community is very, very, this particular community is very, very educated, and we always try to do the right thing. So I don't want to waste much time. My only point to all of you here is that today my presentation is not going to be very large because idea is that lot of you are, taking the right sessions, the right, and you are talking, and lot of friends are there whom I talk regularly. Because now that आप लोग ने you have done 21A regulations and industry is also expanding big time. So दो चीज which I wanted to keep you updated, is where is the opportunity coming? क्या हम लोगों से तो गलती नहीं हो रहा है कि that we are not predicting, because एक चीज I always believe in my life that if I don't work on something which is invisible, then it will be very difficult for all of us to sustain in the future, because as a business we always have to prepare for the future, and until unless we are futuristic, future will deny us for any opportunity that will exist at that point of time. So friends, welcome to all of you into a very, very detailed, matlab, today's presentation is trying to be slightly separate. So all of you are businessmen. Obviously, you run a very large distribution business, and every successful businessman runs a successful business. So my question, I will basically ask you a few questions because यहाँ पे काफी clients भी हैं जो business करते हैं, and my question is, आज जैसे कोटक महिंद्रा बैंक every day, every listing price, every company which is listed on the exchange, they get trading from the 9:15 in the morning till 3:30. Now, आप लोगों को कितने लोगों को लगता है, how many times do you think Mr. Uday Kotak ji have checked the stock price of Kotak Bank today from the CFO? मतलब फोन करके CFO को पूछता होगा, अरे स्टॉक अभी शेयर प्राइस कितना जा रहा है रे? And every time the CFO is giving him an alternate answer, he is actually calculating how much wealth is he creating because of the change in the stock price. Now, the answer is obviously 0 times, because Uday Kotak ji के पास time नहीं है to understand how is the stock price. Now, if I understand this particular behavior of a businessman, the Uday Kotak ji see the stock, his Kotak Bank as an investment in business and not an investment in stock of Kotak Bank. And that where all the difference lies
being investing in business and investing in Kotak Bank stock. Now, as a financial distributor or as a financial person, all of you are into financial distribution business or you are into any other businesses because you are occupied in your own business. Now, this is something which is very, very interesting that कोई भी business में जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है वो तीन तरह से होता है. थ्री टाइप्स बेस्ड बाय विच अ बिजनेस क्रिएट्स कैपिटल. जैसे आप लोग भी बिजनेस करते हो, सो द थ्री प्रोसेस आर बेसिकली आइदर बिजनेस से कैश फ्लो जनरेट होता है, या आप अपना बिजनेस को डाइल्यूट करते हो, या आप कहीं पे यू बेसिकली रेज डेट. यू रेज डेट मतलब आप कहीं ना कहीं पे आप पैसा बैंक से उधार लेते हो या किसी और से लेते हो, और जब भी वो पैसा आपको मिल जाती है you basically try to deploy in either expansion, diversification या debt और dividend. और ये हम लोग सारे PMS distributor जो हम लोग कर रहे हैं, तो it is everywhere. So the business runs everywhere. Now for a businessman, the most two important activities is the expansion and diversification. Because as I've said, when you want to expand in the future, you can expand in two ways. Either you expand your business or you diversify your business. And that is where, PMS, alternate assets, all these comes in the play, because all of you are today set in your mutual fund distribution business or कोई भी चीज. Let's say for example, if you are not from the financial distribution business, मगर आपके पास कुछ business, you are doing something else, everybody wants to diversify as a second income or an expansion of their business. Now, for all of you, who are managing clients or aapke paas, since all of you are into financial distribution business, my only request to you would be, don't talk or don't consider PMS as an investment in few stocks. PMS is nothing but basically for an existing, let's say for example, I am an employed individual and I will get salary till 58 years of age or maybe 60 years of age. Now everybody wants to diversify. Everybody wants to diversify today. सबको चाहिए दूसरा. Either they want second income, because अगर ये नहीं होता तो मुकेश अंबानी would have continued with Reliance Industries. He would not have diversified into Reliance Retail or Reliance Geo Financial Service. So expansion and diversification is the key to your growth as an individual, growth as a profession. So start looking alternate assets as an investment for diversification. Now, why would you see it as a diversification in your existing business? Aaj, let's say for example, you own a petrol pump, or let's say for example, you own a mutual fund business and you are doing very good, 100-150 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ के हो गया होगा, और एक सस्टेनेबल कैश फ्लो आपके पास आता जा रहा है. यू आर गेटिंग अ सस्टेनेबल कैश फ्लो. नाउ द पॉइंट इज, इट इज हाई टाइम दैट यू डिसाइड टू डाइवर्सिफाई एनी बिजनेस. नाउ आज के दिन में कोई भी बिजनेस आप डाइवर्सिफाई करने के लिए जाएंगे, यू हैव टू सेट अप, देयर इज अ सेटअप कॉस्ट, देयर इज एन ओवरहेड एक्सपेंसेस, आपको एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे, एंड दिस टिपिकली रन्स इन द रेंज ऑफ 35-40%. बिकॉज टुडे अगर आपके पास 200-250 करोड़ का यूएम हो गया होगा म्यूचुअल फंड में, and if you appoint any competent person to take care of that and you give your time to the new business, that will also involve almost 30-35% of the cost. Whereas when you identify a good quality PMS, and we will discuss how do you select a PMS, you are basically investing into a business, not in stocks, at the cost of only 2.5%, because that's the management fee. मगर इसमें अगर हम लोग कैरिंग कॉस्ट पकड़ते तो उसमें 50 पैसा का एडिशनल होता है. सो मैक्सिमम 3% is what is basically your overhead expenses in starting a business, and that is why you should start looking into, and opportunity काफी बढ़ रहा है. The opportunity is very big. Now अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि नहीं मेरे को, आई डोंट नो, बट ऑब्वियसली ऑल ऑफ यू नोटिस इन द लास्ट 10 days, there was a almost 6 IPO raised almost 4 lakh crore of mobilization. Now, if I consider this to be a portfolio of stocks, so in a span of 10 days, the Indian domestic investors purchased a portfolio of 4 lakh crore. मतलब entire PMS industry last 1993 में अगर PMS industry बना होगा और अभी 2023 which is almost 30 years, अगर 30 years में
6 लाख करोड़ बनाए, तो हो सकता है लास्ट 10 दिन में दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री हैज गिवन मनी टू द, अगर मैं इसको पकड़ता हूं कि मैं ऐसा कोई पीएमएस बनाया होता जहां पे वेयर आई हैव केप्ट ऑल दी स्टॉक्स एज अ प्राइवेट इक्विटी स्टॉक्स, एंड दिस शोज द अपॉर्चुनिटी. So my point is, if investors are ready to buy portfolios, because I'm sure everybody have invested to buy this portfolio, because there would be a lot of clients who are common across these 6 IPOs which had happened over the last 10 days. So my point is, if 3.7 lakh crore can move into 7 stocks, what stops money flowing to a 16 to 18 stocks of a PMS portfolio? Koi bhi ho. Obviously, this particular sessions is being, sponsored by Piper Serica, and I am part of the Piper Serica team and Piper Serica board. So I also have lot of observation when it comes to how we are going to clients and what are the way by we are talking. Because paisa to aa raha hai. If we are not selling, then it is that we don't have a conviction or we are not being able to sell the client. So client is buying equity and client is eager to buy equity. Somewhere there is a stable, futuristic stable outlook है, जहां पे लग रहा है कि बॉस हो सकता है कि अगला नेक्स्ट 3-4 साल में काफी पैसा बनेगा, and actually lot of money will be able to be created. Now, my point to all of you is that this slide I keeps on showing to everybody, and I think you should use this slide in all your presentation which you show to the client, because this speaks about the changing mindset of the Indian or as a consumer. जैसे जैसे हमारे इनकम बढ़ता जाता है, हमारे प्रेफरेंस भी बढ़ता जाता है. ऑल माई प्रेफरेंस स्टार्ट इंक्रीजिंग. Initially, I was traveling in public transport. Then I brought bike. Then I moved to a first four-wheeler. Then I brought a good quality sedan. And then my aspiration is to get into high car. Now, mobility is a common factor. सब में mobility है, सब में AC चलता है, सब में leather seat cover होता है. फिर भी, why do people want to leave this and go here? So we will try to understand, why does people wants to do that? Or why is, today when you move around the city, that also in the big cities you will see all the luxury cars, because boss, any car, any of these three have a common, that they have four wheel, unme AC chalta hai, usme do headlight hai, but still people prefer, as they start making money, they move into this one. And that is where the opportunity of product like PMS and AIF is coming up. And that is why all of you who has taken the first step to get yourself certified have the first hand. And that is where you need to come on. Now, agar if you would have noticed, पहले IPO में 1.5 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ की ओवर सब्सक्रिप्शन होता था. I remember in 2019 when the IPO, ऐसा situation आया था that when the market was extremely bullish, there was a mobilization of 1,67,000 crore का mobilization हुआ है. And exactly from 2019, the market has grown by 100% in IPO subscription. In IPO subscription, there is a site called BSE S&P 500 where they track the IPO growth. IPO का भी कैसे growth हो रहा है. अभी आपने देखा होगा Edelweiss ने एक IPO fund launch किया. Why did they launch IPO fund? Because the kind of return that an IPO is giving, so that makes it viable for things. So money is growing very fast in an investor's wallet. आज के दिन में आपका भी, if you compare yourself with the industry, and if I ask you how much your income has grown in the last 3 years, everybody would agree that your income has grown by minimum by almost 30 to 40%. Now, कोई भी टाइम whenever the income grows up by 30 to 40%, वो सारा इंक्रीमेंट आपका नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में नहीं जाता है. आप सडनली रात को 3 रोटी खाते थे, यू विल नेवर हैव 6 रोटीज, because your income has grown from 100 rupees to 200. You might shift to a better quality of food ingredients. हो सकता है पहले आप लोकल लेवल में राइस खरीदते थे, अभी आप you will buy ITC rice or let's say Kohinoor rice or whatever. Now that can only increase your existing cost by 10% or maximum 15%. So what happens to the rest of the money that you are thing, and that goes into the discretionary spends, and one of the biggest discretionary spends is the capital market today, and we will see more. अभी कुछ दिन पहले एक CNBC का वो आया था कि अभी
17,000 करोड़ का एसआईपी होता है महीने का, and we are not very far when we will have a daily SIP of 17,000 crore. So all this speaks that there is a huge growing appetite of equity investing in the mindset of the people. Now हम लोग asset allocations की बात करते हैं, but asset allocation हम we do not follow asset allocations with the investors, and because when it comes we only talk about a single assets or a single asset products. PMS is a great portfolio provided you choose the right product, because the data says that industry is growing, the number of clients are growing, and there are opportunities where you have to participate. And today Ajay will take you through a very detailed discussion that paisa kaise ban raha hai aaj ke din, and why is that some companies are not being able to make money. Now PMS का सबसे बड़ा benefit आज के दिन में, because all of you are expert in equity investing, one of the biggest benefit of PMS is that it does not operate as a pool activity. Now इसके दो फायदे होते हैं, that what is the benefit of not having in a pool structure, because in a pool structure a behavior of one structure, a behavior of one client leads to the experience of other people. So if today a large client exits the mutual fund, it will have an impact on the AUM. So you start asking, so AUM matters in a mutual fund selection, popularity matters, obviously the liquidity matters, which is basically the ultimately the AUM, और उसमें कितना buying and selling हर दिन हो रहा है. And that is where the most important part of the mutual fund is that, and now that you have masters. But when it comes to a PMS, all these does not operate, because if PMS is a private placement where koi, if anybody is leaving or anybody is coming in, will not impact the holding or the performance of the portfolio. So when you compare a PMS, you do not compare on the same lines as mutual fund, because मैंने काफी लोगों को सुना है कि I do with this particular company because वो कंपनी के साथ मेरा काफी दिन का रिलेशनशिप है. वेरी गुड, you do not wear the clothes. आज अगर रात को यहाँ से आपको कोई शादी बारी में जाना होगा, you will not wear the clothes that you are wearing in the office. हर दिन तो वही पहनते हैं, उसमें हम कंफर्टेबल है. तो शादी बारी में where we are not wearing the same clothes that we work in office, because the purpose and the objectives are different. Similarly, when it comes to equity investing as an investment in business, not as an investment in any investment vehicle, आई थिंक पीएमएस शुड बी अ लॉन्ग टर्म क्राइटेरिया, जहां पे आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो. आपने 200 करोड़ का म्यूचुअल फंड का यूएम एक दिन में नहीं बनाया, आपने 15 साल बनाया. सो द सेम थिंग इज व्हेन यू पुट मनी इनटू अ गुड क्वालिटी बिजनेसेस, इट विल टेक more than 15-20 years, and that is how you will have to communicate to your client, because nobody makes money overnight. और हम लोग ये सुनते रहते हैं, and it is not something that I'm talking new. What I'm trying to show is that your filter of criteria for a PMS should not be the same, because I have seen a lot of people, because I have been into this industry from, I'm one of the oldest guy in this industry in terms of the PMS is concerned, and I have always been saying to my clients that don't see PMS as an investment in any instrument. It is about आपको अगर टाइम नहीं होगा आज मारुति में टू गेट द शोरूम ऑफ मारुति, but you are buying the Maruti showroom by investing into Maruti stock. So invest into the business and understand. So investment philosophy matters and fund manager matters. And that is where you have to play a very big role. क्योंकि 20 साल पहले जो जर्नी आपने शुरू किए थे with mutual fund, the same journey is going to start from PMS here. And obviously all of you have, all of you are endurant, and all of you have a huge amount of experience in this market. Now, how do you identify a good portfolio manager? Portfolio manager, because कल जैसे देयर वाज डिस्कशन ऑन द एआईएफ, हम लोग का जो कम्युनिटी है एआईएफ कम्युनिटी में पीएमएस, उसमें देख रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट सम परफॉर्मेंस. नाउ एज अ पीएमएस डिस्ट्रीब्यूटर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई भी आप फंड मैनेजर से बात करते हो, दैट फंड मैनेजर इज बेसिकली जगलिंग क्वालिटी, अपॉर्चुनिटी एंड वैल्यूएशन. नाउ डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू गिव प्रायोरिटी, आपका प्रायोरिटी कौन सा है, आपका इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी बनता है. जैसे मान लीजिए सुनील सिंघानिया साहब के अगर आप पीएमएस देखेंगे, व्हाई एम आई सेइंग दिस, बिकॉज वी विल टॉक अबाउट दिस डेटा विद समबडी ऑफ यू हैव पोस्टेड, एंड इट इज अ वेरी वेरी वैलिड डेटा. नाउ आप जब सुनील सिंघानिया का बात करते हो, सुनील सिंघानिया फॉलो प्राइस स्ट्रेटेजी. अगर आप पंकज मुरारका की बात करते हो, वो फॉलो करता है प्राइस स्ट्रेटेजी. जब आप भारत भाई शाह का बात करते हो, ही टॉक्स अबाउट क्वालिटी ऑफ द बिजनेस एंड द अपॉर्चुनिटी. जैसे सौरभ मुखर्जी का भी बात करते हो, he talks about the quality of the business and opportunity. Now what I'm trying to say here is that
एवरी स्टेप, जब भी कोई एक बंदा, कोई एक बिजनेस जब एक फिलोसॉफी फॉलो करता है, वो फिलोसॉफी उनका आइडेंटिटी हो जाता है. जैसे इफ आई आस्क ऑल ऑफ यू दैट व्हाट इज द हु इज द ओनर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड QGLP, आप एकदम बिना सोच समझ के बोल सकते हैं रामदेव जी अग्रवाल, मोतीलाल ओसवाल के ये थॉट प्रोसेस है, बिकॉज इट इज एन एस्टेब्लिश्ड डॉक्यूमेंटेड इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी. नाउ ये इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी का भी काफी volatility रहता है, which Ajay will talk in details with you. Now the volatility is that if everybody has a we will not discuss this slide here. अगर सबका फिलोसॉफी है और सब लोग अपना फिलोसॉफी के ऊपर इतना कन्विंसिंग है, then why is somebody giving a -14% return and during the same period somebody is giving 19% return? Did you imagine there is a 33% standard deviation between these two fund managers? Now the question is, as a portfolio manager, I remember, I don't know how many of you would remember this. मैं कभी इस कंपनीज के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं किए थे, मार्सेलस के बारे में, एंड आई यूज्ड टू से दैट आई हैव सर्टेन नॉन कम्पीट नॉन disclosure arrangement with Saurav, and I don't discuss anything of Marcellus, because I have always believed that sticking to an investment philosophy is one of the biggest problem of a process or a services, because होटल में कौन सा कस्टमर किस प्रकार के आएंगे, सर्विस उसी हिसाब से चेंज होता रहता है. Whenever you are into service industry, आपके ऑफिस में कोई क्लाइंट आता है who is businessman, और a client आता है who is a sophisticated professional. हो सकता है is a client who has received money from his parents and he is not a successful professional nor a business, but he has got lot of estate money which is. So you will define your investment services. आप किस कैसे उनको सर्विस करेंगे वो आपकी एक्सपीरियंस बताती है और आपकी प्रोसेस बताता है. So my question to the entire into the entire PMS community, because now that I am now part of the APME board as a not only as a trainer, but they are going to involve me in a lot of ways because I have a very strong voice for the industry. My question is, how can an industry in the same large category fund have such a wide standard deviation? कहाँ पे गलत हो रहा है? Where somebody is doing 19% and in the same period somebody is doing -14%. Can you imagine? कोई अगर 1 करोड़ रुपया दिया होगा, he is actually playing within a standard deviation of 33%, and that is a huge number. So that is a huge opportunity loss. So as a PMS distributor, you need to know, are we choosing the wrong product based on a wrong assumption? हम लोग कुछ देख के we are running the wrong portfolio manager, or are we ignoring the core concept of PMS? PMS होता क्या है? और are we getting emotional with certain factor or competency? नहीं, मेरे के साथ इनका 20 साल का रिलेशनशिप है और ये कंपनी मेरे को he helped me when nobody was there. बस investment and personal are two different things. Or are we chasing the wrong factor for deciding the PMS? So all these are very, very important while you discuss the PMS with a client, because I have always seen in a discussions that boss हमारे relation हमारे PMS ने return नहीं दिया, where I don't know how many of you know, 1.5 साल पहले when I used to sell PMS and I had a I was actively listened, I used to say that I had 100 crores in abacus. I don't know how many of you know that. आप लोग को बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2 साल पहले भी अपने मेरा ट्रेनिंग लिया हुआ है. I used to say, I was one of the first guy to have 100 crore allocation in abacus. और मैं ये भी करता था कि मैं मार्सेलस में मेरा एक पैसा नहीं है और मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप मार्सेलस के बारे में बात नहीं करेंगे, because I am not supposed to talk about Marcellus publicly. So my point is, are we choosing the right product? Because अगर मेरा client if you go and pick to my client, they will say that boss मैं तो PMS छोड़ के कुछ करता ही नहीं हूँ, because Romit gives me the advice which is supposed to be given. Although I'm not a distributor, I help a lot of clients and clients of the distributors to attend that. So are we choosing the wrong product, or are we trying to evaluate on the basis of wrong parameter? That is where you need to all work, because what I find that most of the data that we see in the market are very, very cooked data. ये डेटा जो है ना वो बायस डेटा होता है. वो हो सकता है कि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज इनके प्रोडक्ट बेचते हैं, बिकॉज इसी टाइम में अगर पाइपर सेरेका ने 22% का रिटर्न दिया है तो इट इज बिगर देन एनीवेयर. तो वेयर इज दैट डेटा बीइंग शोन?
So it is not that I work with Piper Serica. I am a consultant to 2-3 other companies where you know that I have a very unbiased opinion. मैं किसी के बारे में अगर if I'm talking, I have to talk positive. जैसे अभी मैं नियो के बारे में बात कर रहा था. Somebody was asking me yesterday कि 1 करोड़ रुपया लगाना है आईएफ में, किस में लगाए? नियो में लगाओ. स्पेशल क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट अगर आपको डेट में लगाना. So please remember that please start looking into the right factors. And what are the right factors that you need to know? Ajay will be speaking. Now, this is a very interesting, style which I recently मैं ये आपनी को दिया था कि what is an observed opinion about the 3 product mutual funds, PMS और alternate investment को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, what lead to underperformance? Underperformance होता किस लिए? म्यूचुअल फंड में तो उतना इंप्रेशन है लोगों का, एआईएफ में भी लिक्विडिटी नहीं है. सो what we realize that all these 3 products which are under the managed portfolio, their performance depends upon the regulations, market participation, investment investment horizon and investment style. Now कोई भी प्रोडक्ट म्यूचुअल a lot of disturbance. शंकर वॉइस कट हो रहा है आपका. शंकरन अरे हेलो रोमित सर, दादा आपका आपका voice वॉइस कट रहा है. कट हो रहा है. is it clear now? Is नहीं it सर, clear? आवाज नहीं आ रही, कट हो रही है आपकी. Is it clear now? No, it is still. Okay, It just is give me better, one. Just give me but one. still not clear. Okay, just give me 1 minute. I'll just give me one. I think it will be okay now. Yes, it is quite okay. Better. Yeah. So thank you. So my point is कि as a PMS distributor or as an advisor to PMS, you should understand that what are the various factors that decides the performance of a portfolio. What is his investing style? What is the investment philosophy? In what market participation? Are you evaluating the fund manager? Investment horizon क्या है? Product structure क्या है? अगर कुछ regulations bottleneck है तो वो भी. Because अगर मैं PMS के बारे में बात करता हूँ, the most 2 important parameter that leads to underperformance is the investment philosophy and the investment style. And that is where Ajay is going to throw light. So that was all, because we will keep doing this kind of sessions very often because industry to बढ़ रहा है and industry is growing very big. Clients are inquiring about products, new products. आप लोग भी training लिए हैं. Mutual fund तो चलो अपनी गाड़ी, it is going and it is an established business. So the more and more we interact. So remember, whenever we are talking about investment or we are talking about managed portfolios, you need to see about all these 7 parameters. Don't look for one parameter which is investment style. हो सकता है उनका philosophy अलग होता है and investment style or philosophy is different because all these factor contributes, and the most important factor जिसको आप which you think is the most important factor, that is the biggest factor for contributing to the underperformance of the PMS business. Now I will not spend much time because Ajay wants to share his product to all of you. Howard Marks is one of the biggest investment manager in this world who happens to be known because उनका जो मेमो निकलता है ना वोक्ट्री का, वो वॉरेन बुफे भी उसको पढ़ता है and वॉरेन बुफे भी उसको अप्रिशिएट करता है. So he says that हमारे बिजनेस में ना no business can remain good forever and it cannot become bad. एक अच्छा बिजनेस भी खराब हो जाता है अगर आप उनको हाई प्राइस में खरीदते हो. सिमिलरली कोई भी बिजनेस इतना भी बुरा नहीं है कि वो कभी अच्छा नहीं हो सकता है अगर आप उसको लो प्राइस में खरीदते हो. सो नो बिजनेस इज गुड एवर दैट इट कैनॉट बिकम बैड इफ इट इज बॉट एट अ हाई प्राइस. एंड सिमिलरली नो बिजनेस इज बैड एवर. कोई भी बिजनेस जिंदगी भर खराब नहीं सकता है
if it is brought at a low price. And this particular is available on the Oak Tree Capital. So you will have to continuously judge the opportunity that exists in the market. Oh, ye acha business. There is a difference between a good business and a great investment. Not that always a good business is a great investment. Ultimately, we need to find out what is a great investment, and that is what that is what is expected out of my portfolio manager. Just because my portfolio has a investment philosophy, वो investment philosophy आपकी pride है, वो हमारी necessity नहीं है, हमारी necessity performance है. That is why we are trying to explore this market. So please understand, PMS is about managing a service. It is not a product. ये कोई bundled product नहीं है जहाँ पे आप उसको एक बार fill it, shut it, forget it हो सकता है. So start understanding the product at the micro level, because ये product उतना easy नहीं है जितना easy हो सकता है, जितना आप लोग the way you like it. Everybody is trying to convince the client on the same parameter, and that is where the industry is going through the bad phase. नहीं तो फिर I never try to understand. All of these guys are friend to me. मतलब ये मैं आपको बता सकता हूँ, इसमें जितने भी सारे लोगों का आप नाम देख रहे हैं ना, I can call up that guy right away and I can bring him here to understand. But I know why are they underperforming. I know why is Sunil Singhania performing, or why, because अगर यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का नंबर दिया है, जो मोतीलाल ओसवाल का इतना दिन से जो प्रोडक्ट मैनेज कर रहा था, मनीष सोनतालिया और मैं, we were together in Calcutta from school. We were in the same school, same college, same graduation, same management. So I know his style. So friends, please start looking into other factors and discuss before you decide on a PMS, because not that who sounds good will deliver good. Saurabh Mukherjee sounded very good. The way he talked, the way he explained things is very good. But philosophy, I'm not saying he's a bad philosophy. Ho sakta hai. He's treating like a product, and I don't want PMS as a product. So now, before I end the discussions and hand it over to Ajay, now I want you to, because I've just taken up the franchisee of a luxury car, or since all of you are good enough, so मैं आप सबसे एक ही चीज पूछना चाहता हूँ कि आज अगर मैं आपको 50 लाख दूंगा तो कौन सा गाड़ी आप खरीदेंगे? Which one would you buy? Audi, Mercedes, BMW? Which one would all of you buy? Which is the best 50 lakhs car here? Now, my point is, somebody will say Mercedes, Sujit Bhai saying BMW, Ajay will say, Audi. Now, when you are seeing this, does anybody also thinking that there are cars? There is also a car called Maruti Ciaz, or there is a car called Honda City, or there is a car called Toyota Etios. The answer is no. आप जब 50 लाख देख रहे थे, आपके दिमाग में ना, your concentration was only on Audi, Mercedes and BMW. It was not car, it was not Ciaz, it was not Honda. But the point is, ये जो 6 गाड़ी हमने आपको दिखाया ना, all has the same comfort. They are all big brands. Honda is not small, Toyota is not small, Jaguar is not small, Audi is not small, Mercedes is not small. They have brands, they have got comfort, they have got mileage, they have got mobility, उनकी AC ठंडा रहता है. Her car has a great music system. But why people buy different cars? Not that they give you experience, not that the status, not that it is personalization. It is what you give them to choose. उसमें आपका ऑफर था, तीनों ही ऑफर था, BMW, Audi और Mercedes, और आप उसी में अटके थे. अगर मैं आपको चॉइस देता तो आप दूसरे में जाते. Similarly, in your business, when you are meeting a large client, don't talk about any retail products. वो आपके लिए opportunity loss है, because आप दोनों में ही कमाएंगे, but where you will earn more, because we choose from what we are offered. At 50 lakhs, अगर मैं आपको यहाँ पे ना Honda City देता, तो आप Honda City करते हैं, because you are acquainted with it. हो सकता है आप Honda City चलाते हैं, हो सकता है आप टाटा चलाते हैं, टाटा मोटर्स की गाड़ियां चलाते हैं. जैसे मेरे घर पे टोयोटा ऑल्टिस है, मैं I would have never gone through it. I am very happy with ऑल्टिस. But if I had 50 lakhs और मैं घर में बोलूं कि कौन सा लेना है, people will say that boss पापा थोड़ा BMW खरीदते. So friends, come out of your thought process that comfort, brand, all these mileage, mobility, they are not important. Whatever you will offer, हमने आपको AIF के लिए ट्रेनिंग के लिए ऑफर किए थे, आपने लिए थे. अगर मैं आपको दूसरा कुछ ऑफर करता, आप लिए. So life does not depends upon
other factors. Life depends upon you choose what is offered to your client. So clients को offer करिए good quality products. Ask him to get into good quality PMSs because that is where client will appreciate your effort. Because last 20 साल से आपने काफी पैसा you have helped your client in building up their health. So advise your investor to choose the right investment vehicle. And once they have invested through you, treat them as a business. You remember, Uday Kotak हर दिन stock price का value नहीं पकड़ता है. He does not try to understand what is the stock price of Kotak Bank every day. क्या आज मैं मुकेश अंबानी को beat कर पाया? No. I am missing by 1,000 crores. So if you're not investing, tell your client that if you're not investing in portfolio management services, you are really missing something. Because all good, great companies will eventually become big. And obviously, आप अगर client के लिए, if you're thinking, you would want him to invest into that. So I leave this with a thought in mind कि selling a PMS is not as easy as a mutual fund. It is slightly different. And how and who would be your investment manager? I propose to you that I have a very long exposure in इक्विटी मार्केट और लोग मेरे को पूछते हैं कि आप इतना दिन से कर रहे हो, आप तो कोई भी कंपनी में ऑल दिस जितने भी सारे कंपनी में देखें उसमें आप सीईओ बन सकते हैं, आप ड्राइव कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आपको जानते हैं. Why did you join Piper Serica or why are you associating with Piper Serica? I am associated with Piper Serica for two reasons. For this sweet guy who's going to come in the next 1 minute, Ajay Modi, I like his thought process and somewhere उनकी philosophy मेरे को लगता है because I've seen this industry 20 years में, you know, मैं 20 साल से industry को देख रहा हूँ equity because I have made money for PMS, my clients has made money into PMS, and somewhere with the changing landscape. So Ajay, over to you. Please enlighten people with with your investment philosophy, and I think people would be ready to explore opportunities with you, and and we will then get into questions. So, Dada, thank you very much. What I will do is I will keep my presentation very short, very precise, and I will try to ask certain things to you guys. I want to take this opportunity to bust some myths and to also share my thought process, my limited understanding of markets. So let me start my presentation. I think my first slide itself will be a question to you all. So I want to start with a simple question. Do you know this guy? Do you guys know this white-haired American sitting in front of you? Do you know? Anyone can answer. I will not wait for everyone, but anyone can answer. Does anyone here know this guy? Peter Lynch. Okay, so Nikhil Bhai is the first one to answer Peter Lynch. So very correct. He is Peter Lynch, but let me also give you a thought process why I asked you this question. So who's Peter Lynch? First of all, I want to give you a small thought. Peter Lynch is an American investor, mutual fund manager, author, philanthropist, so many in one. He used to manage a fund called Magellan Fund at Fidelity Investments. This was between 1977 and 1990. In these 13 years, this old man returned 29.2% annual return, the most consistent performance over 13 years in the history of the world. 29.2, hands down beating his benchmark by more than double. Also in his tenure, the AUM of the fund that he was managing increased from $18 million to almost $14 billion. So that's who he is. Why I told you about him is because he has this one quote that really hits me hard. He says that investing in stocks is an art, not a science. And people who have been trained to rigidly quantify everything have a big disadvantage. अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मतलब मैं क्यों इस कोट को इतना पसंद करता हूँ, ये कोट मेरे दिमाग को क्यों खोल देता है. बिकॉज पीटर कहता है कि यार मतलब market has 3,000 listed companies or 3,300 listed companies. पर आप क्यों पूछ रहे हो कि आपका यूनिवर्स क्या है? A lot of investors I come across
ask me, a lot of advisors I come across ask me, सर आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपका, चलो स्ट्रैटेजी मैं समझ सकता हूँ, पीपल आस्क मी आपका स्टॉक यूनिवर्स क्या है, and then there is some intelligent fund manager who says my stock universe is only 50 companies because इंडिया का हिस्ट्री है कि सिर्फ 50 कंपनीज ने पिछले 10 साल में कंसिस्टेंटली रिटर्न दिया है. When I first heard this response, I was laughing my brains out because I thought अगर 50 ही कंपनीज ने रिटर्न दिया है तो बाकी 3250 कंपनीज के प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं, मतलब वो सो रहे हैं क्या. बट ये सही नहीं है. मतलब I don't know if you should have a stock universe of 100 companies or 200 companies और 500 कंपनी. मतलब मुझे ऐसे लगता है मेरा स्टॉक यूनिवर्स तो बस 3300 कंपनीज, अगर सारी लिस्टेड है तो सारी है. मतलब इट इज लाइक सेइंग, इट इज वेरी इंट्रीगिंग, बट इट इज लाइक सेइंग किसी को ये पूछना कि आपका स्टॉक यूनिवर्स क्या है, इट इज लाइक सेइंग आप एक जंग के मैदान को इमेजिन करो जहां पे सामने आपकी ओपोनेंट है जिनके पास 3300 लोग हैं, और आप अपने ट्रूप के लीडर से पूछ रहे हो हमको कितने लोग भेजने हैं इनके सामने, 50, 60, 100, कैसे जीतोगे. अब जो आपका ओपोनेंट है वो मिस्टर मार्केट है, 3300 कंपनीज, एंड यू, if you ask someone what is your universe, I think that's a wrong question to ask, and that is what Peter Lynch says. Why are you rigidly quantifying everything? Why are you saying I will only invest in companies which are making 18% EBITDA margin? Why can't you not invest in companies which are making 4% EBITDA margin? 18% EBITDA margin of a 100 crore turnover is 18 crores. 4% EBITDA margin of a 1 lakh crore turnover is 4,000 crores. Why would you not want to own 4,000 crores profitability and stay only with 18? That's my first thought. My next question to you all. Do you know this guy? आप सबके लिए, आप, whether you are an investor, advisor, whether you are my friend attending this webinar, whether you are Mr. Romit Parat, do you know this guy? Obviously, yes. Okay, perfect. Obviously, Warren Buffett. Now, if you know this guy, I want you to also answer this question. What is his investment strategy? मतलब मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मालूम है. डोंट एक्सपेक्ट मी टू इन द नेक्स्ट स्लाइड गिव यू द आंसर. मुझे नहीं मालूम है. आप लोगों में से किसी ने सुना है क्या कभी पीटर, आई मीन वॉरेन बुफे? फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट, वॉरेन बुफे दुनिया का सबसे लेजेंडरी इन्वेस्टर है, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, और दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी है. फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर उसने उसके वेल्थ फिलेंथ्रोपी में नहीं दी होती तो आज भी वॉरेन बुफे दुनिया का नंबर 1 रिचेस्ट आदमी होता. अब क्या है, मतलब वॉरेन बुफे की स्ट्रैटेजी क्या है? समवन विल से वॉरेन बुफे इज अ वैल्यू इन्वेस्टर, समवन विल से वॉरेन बुफे इज अ XYZ. पर ये तो उसका कॉन्स्ट्रक्ट है ना, वैल्यू, लॉन्ग टर्म, बाय एंड होल्ड. मतलब कभी आपने सुना वॉरेन बुफे ने कहा कि मैं ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूं जो हर साल अगले पिछले 10 साल से 12% मिनिमम ग्रोथ कर रही हैं, 15% का मिनिमम इबिडा मार्जिन बना रही हैं, कैश फ्लो पॉजिटिव है, डेट फ्री है? लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दिस, आपके पोर्टफोलियो में डेट फ्री कंपनीज हैं क्या? क्यों, कैपिटल एलोकेशन में डेट और इक्विटी तो साथ में आता है ना. तो वाई वन आस्क डेट फ्री है, मतलब क्या करोगे डेट फ्री लेके? वाई शुड द कंपनी ओनली रन ऑन इक्विटी कैपिटल? वाई नॉट डेट कैपिटल? डेट कैपिटल इज चीपर. सो माय क्वेश्चन इज, वॉरेन बुफे कभी सुना आपने? मैंने पर्सनली पिछले 9 साल में वॉरेन बुफे के हर एनुअल मीटिंग को डिजिटली अटेंड किया है, हर मीटिंग को. आई रिगार्ड हिम एज समवन who has been the most consistent of the investor in the world. मैंने तो कभी वॉरेन बुफे से नहीं सुना कि उन्होंने कहा मेरी ये स्ट्रैटेजी है, मैं ये स्टॉक इस तरीके से मैं स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ. वॉरेन बुफे ने हमेशा से सिंपली यही कहा है, अच्छी कंपनीज, डिसेंट फंडामेंटल्स एंड ग्रेट वैल्यूएशन. ये वॉरेन बुफे ने यही कहा है. और इसी के साथ वॉरेन बुफे ने एप्पल में मल्टीबैगर, मतलब लोग पूछते हैं कि लार्ज कैप्स में मल्टीबैगर बनता है क्या, वॉरेन बुफे ने तो एप्पल में बनाया मल्टीबैगर, मतलब दुनिया का सबसे लार्ज कैप कंपनी है. नाउ वाई वॉरेन बुफे, मैंने वॉरेन बुफे की आपको क्यों बारे में बताया, क्योंकि वॉरेन बुफे का भी एक कोट है जो मेरे पर्सनली बहुत करीब है, और वो ये है कि वॉरेन बुफे सेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर एन इन्वेस्टर इज टेम्परामेंट नॉट इंटेलेक्ट. वॉरेन बुफे ने ये भी कहा है कि इन अ रेस बिटवीन someone with a 160 IQ versus someone with a 110 IQ,
there is a high probability that the one with 110 IQ will win the race of investing. मैंने आपको ये तो कह दिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर एन इन्वेस्टर इज टेम्परामेंट नॉट इंटेलेक्ट. इसका मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने क्या सीखा है, ये इम्प्लीमेंट किया है और क्या परफॉर्मेंस रहा है वो दिखाना चाहता हूं. मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, the quote that I am showing you is the perfect recipe for making money. वॉरेन बुफे ने आपको, हमको, हम सबको, he showed us the perfect recipe of making money. एंड नीचे जो लोगो है वो वॉरेन बुफे के इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, बाय द वे. वो मेरे इन्वेस्टमेंट्स है, वो हमारे इन्वेस्टमेंट है, पाइपर सेरिका पीएमएस के इन्वेस्टमेंट्स है. एंड आई वांट टू शो यू दिस सीडीएसएल. We are all talking because CDSL just a week back hit 10 crore and people are going gaga. In a country of 140 crores, 10 crores is not a big number. And by the way, CDSL has gone from 1 crore to 10 crore in a matter of 4.5 years. 4 years, I have made 10x return in CDSL. 200 रुपए पे पहली बार ये स्टॉक खरीदा था और अभी as we speak 1900 से थोड़ा ऊपर. Similarly, Apollo Hospital, 1100 पे we bought 4 years back. This is at 5500. Angel One, 300 पे हमने खरीदा था 3 साल पहले. This is at 3000. And it is not just कि मैंने एक fancy number दिखा दिया आपको. Our performance gets published in the open, and there are enough and more articles from 3 years back that we have talked about these companies, 4 years back that we have talked about these companies. In fact, Angel One, I am talking to you 10x in 3 years. एंजल वन के प्रमोटर दिनेश ठक्कर का मैंने पर्सनली एक इंटरव्यू किया था, जिसका वीडियो लिंक आई विल शेयर इन द चैट शॉर्टली. Another company, APL Apollo Tubes, 160 to 1600, 10x in 4 years. Lemon Tree, 33 to 99, 3x in 2 years. Gokaldas Exports, 300 to 900, 3x in 1 year. अब मैं ये बिकॉज आपसे मैंने मेरे विनिंग आइडिया शेयर किए, लॉट ऑफ पीपल विल से आप में तो बायस है, आपने सिर्फ विनिंग आइडियाज बताए, एंड दैट इज व्हाई आई हैव मेड श्योर आई विल आल्सो टेल यू वेयर आई मेड लॉस. I made a loss in PVR. I made a loss in Zomato. I made a loss in IndiaMart. These are some. We made small losses in the other companies also, but these were losses to the tune of 20-30%. Not trying to say I am perfect. Not trying to say anything. What I'm simply trying to say is the bigger money is made when you find great ideas at a bargain and stay with them. APL Apollo in the last 1-2 years might not have delivered much, but in the last 4 years, it is 10x. I have stayed with the stock. I keep booking my profits regularly, little bit here and there, but identifying right companies at right valuation and staying with them, यही secret sauce है पैसे बनाने का, एक ही राज है. And I will go in more detail, but before that, I thought I will show you the performance also, the performance of our PMS. We have 2 portfolios, mid and small cap portfolio and multi-cap portfolio. The multi-cap portfolio has a 8-year CAGR of 20.3% post fees and expenses. We have handsomely beaten our benchmark in 1 month, 3 month, 6 month, 1 year, 3 year, 5 year, 8 year. I have handsomely beaten my benchmarks, and in most cases, my peer group also. We also have an offshore fund, a fund where NRIs can invest dollar capital with a minimum of 1 lakh rupees. उसका भी performance मैं आपको दिखा रहा हूँ. Since inception, June 2019, 4.5 years almost, the since inception return is 17.6%, post fees, post expense, and post fund level tax. So that is the kind of, this is a dollar return, by the way. This is not rupee return. This is a dollar return compared to Nifty 50 USD. I have beaten the index by more than 2x. I hope I will also beat the index by more than 2x for the next 13 years to get to what Sir Peter Lynch got to. But yes, ये रहा performance. I also wanted to share with you the performance of our small cases. We have 3 small cases: Emerging Dominators Plus, which is a mid and small cap;
and wealth compounder, which is a multi-cap. The reason why I am showing performance is that, look, ultimately, I may say great things. I have uh, Romit Dada took example of Marcellus Saurabh Mukherjee. He's a fellow industry mate. He keeps giving a lot of fancy presentations. And I want to ask you, a lot of people might have worked with him, a lot of people might have invested in his portfolio. Are you investing for gyan or are you investing for return? Because if you ask me what is my strategy, I have decided in life, if someone asks me what is your strategy, my simple strategy is paisa banana hai. And not just investor ka, in our portfolios, in our PMS, in our small case, everything that we do, our money is the first money to go in. We are the largest investors in our PMS. 100% skin in the game. All my personal equity public market investment is in my multi-cap portfolio. 100%. Not a single rupee outside. Full skin in the game. Not just that, my family, my wife, all of them are investors in the same portfolio. और देखो, एक बार ना मैं इन्वेस्टर और एडवाइजर की क्वेरी झेल सकता हूँ, वाइफ की क्वेरीज थोड़ी डिफिकल्ट होती है, so you have to make sure you perform there. Now, why and how and what? These are most questions around the performance. ये performance आया कहाँ से? We have a good portfolio of good stocks that have delivered very well in the last few years. और ये सारे almost multi-bagger रहे हैं. Angel One 10x, APL Apollo 10x, CMS doubled in the last 2 years. Apollo Pipes is a recent addition, but that is again something we think is going to be 10x. Tixon Technologies just became a 6x, six bagger today, 6,000 rupees. And the other names. Titan, in fact, is the one that probably is the ये सबसे underplayed multi-bagger story है. I first invested in Titan personally about 5 years back at 650, 700 rupees. वो स्टॉक 1,000 रुपए से 700 रुपए आ गया था because राकेश झुंझुनवाला was selling. So someone said राकेश जी निकल रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम होगा. वो प्रॉब्लम 5 bagger बन गया है अभी. So sometimes you get great things at a great bargain. That is the thought. Now coming to Warren Buffett said, temperament wins. मैं आपको CDSL की स्टोरी बताई. 1 करोड़ डीमैट अकाउंट से 10 करोड़ डीमैट अकाउंट 4.5 साल. 200 rupees stock went to almost 2,000 rupees in a matter of 4 years. बट वो 200 रुपए से 1,000 रुपए गया, फिर 1,000 रुपए से 800 रुपए हो गया, 800 रुपए से 1,200 रुपए होके वापस 800 रुपए हो गया. It tested my patience every quarter almost. But the bigger money is made in holding, in your temperament. अगर मैंने बहुत बार सोचा कि बिकॉज CDSL एज अ कंपनी है ना, उसकी अर्निंग्स आर डिराइव फ्रॉम डीमैट अकाउंट. जब आप ट्रेड करते हो तो उसको पैसा मिलता है, और जब IPOs आते हैं तब दे मेक मनी बिकॉज मोर पीपल अप्लाई, मोर RTA एक्टिविटीज टू बी डन एंड दे मेक मोर मनी. तो जिस एक साल IPO नहीं हुआ, 2021 में 20 में IPOs कम थे, तो उस साल फिर हमें लगा कि यार निकल जाना चाहिए, क्या IPOs कम है. lot of people told us, यार earnings have dropped, earnings have slowed down. CDSL also bought a office, 100 करोड़ रुपए खर्चा करके ऑफिस लिया. तो बहुत लोगों ने कहा कि एक कैपिटल एलोकेशन का प्रॉब्लम है ना, मतलब ये क्यों ले रहे हैं. पर फिर मैंने सोचा यार देखो, ये देश में ना डीमैट अकाउंट्स तो बढ़ते रहेंगे. मतलब देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु से कि आई डोंट वांट माय इन्वेस्टर टू ओपन अ डीमैट अकाउंट because then they will start trading. I say, sorry, that's your problem. Investor is still opening a डीमैट account because आज के डेट में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना इज इट टेक्स लेस टाइम टू ओपन अ डीमैट अकाउंट, मोर टाइम टू मेक मैगी को भी 2 मिनट लग रहा है. डीमैट अकाउंट 1 मिनट से अंदर में हो रहा है. एंड दैट इज वाई वी आर एट 14 करोड़ डीमैट अकाउंट्स, एंड आई एम वेरी श्योर in the next 5 years we will be at 40 crore डीमैट accounts. That is where we are going. तो अगर 40 करोड़ डीमैट अकाउंट होंगे तो CDSL विल मेक मनी फॉर जैम ना. मतलब उसको कुछ, उसकी कोई सेल्स टीम नहीं है, लोग खुद आ रहे हैं सीरोदा के पास, अपस्टॉक्स के पास, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं. बाय डिफॉल्ट डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा. तो इट्स अ ग्रेट लॉन्ग टर्म स्टोरी, बट आई वेंट इनटू दैट स्टोरी एट अ ग्रेट बार्गेन आल्सो.
That is important. And it is not just one. This is another case study, Dixon Technologies. As I talk to you, it has become a six bagger. पर एंड आई विल टेल यू जून 2020 में ये स्टॉक मैंने पहली बार लिया था, 1000 रुपए का था. विद इन 1 ईयर इट वेंट फ्रॉम 1000 to 5000. और मैं सोच रहा था बस आई एम व्हाट अ ग्रेट पर्सन ना, मतलब वॉरेन बुफे से भी बड़ा आदमी हूँ मैं, मैंने एक साल में 5 बैगर बना लिया. इट वेंट फ्रॉम 5000 to 2500 इन द नेक्स्ट 1 ईयर. एंड एट दैट पॉइंट ए लॉट ऑफ पीपल टोल्ड अस कि बहुत महंगा है, बेच दो. इफ आई वुड हैव गिवन इन टू माई टेम्परामेंट, then I wouldn't have stayed till 6000. So it went from 1000 to 5000 to 2500 to 6000. So I am showing you the zone of patience. अब इसमें मैं आपको ये भी बताता हूं हमने किया क्या, मतलब क्या हम बैठे रहे स्टॉक प्राइस को देखते रहे. द आंसर इज नो. When it went from 1000 to 5000, it had become a very large part of my portfolio. 4% से 5 बैगर होगा तो सडनली 18-19% का हो गया था वो. We booked most of the profit, brought down the allocation, took that cash, redeployed somewhere else. फिर वो जब वापस 5000 से 2500 2700 पे आ गया, तो हमने कहा यार 5000 पे अगर नहीं बेचा तो 2500 पे तो लेना चाहिए ना. अगर मैं घर में रहता हूँ, वो 1 करोड़ का है, सडनली पड़ोस का घर 50 लाख का हो गया, तो मुझे लेना चाहिए ना, अगर मुझे लग रहा है मेरा घर 1 करोड़ का है. So I did the same. We at 2700 we increased allocation. Lot of people said बस 2000 हो जाए. I said ठीक है, हो जाने दो और ले लेंगे. Because I thought it's a good play. I mean, what does Dixon Technologies do? Because मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ बता दूं. What does Dixon Technologies do? आप जितना भी फोन, ईयरफोन, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, टीवी जो भी यूज कर रहे हैं आपके घर में, वो आज डिक्सन मैन्युफैक्चर करता है ब्रांड्स के लिए. आउटसोर्स्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर. इट इज द कंट्रीज लार्जेस्ट आउटसोर्स्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर. इंडिया आज से 5 साल पहले साल का, लेट मी रिपीट, इंडिया आज से 5 साल पहले साल का $250 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करता था. टुडे वी आर ऑलमोस्ट ब्रेकिंग इवन. वी आर जस्ट लास्ट ईयर वी जस्ट इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स वर्थ $20 बिलियन. दैट इज द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी आज के डेट में. आप ही अगर 5 साल पहले चले जाओ ना, तो अच्छा क्वालिटी का स्मार्टफोन 40,000 का आता था. आज वो अच्छे क्वालिटी के स्मार्टफोन फोल्ड होके, रैप होके, पता नहीं क्या क्या होके, वो फोन्स 1 लाख के ऊपर चले गए. दैट्स द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. एवरीवन वांट्स टू हैव अ. पहले ऐसा होता था जिसकी 1 BHK था, वहां पे देयर यूज्ड टू बी 1 बेडरूम विद एन AC. टुडे लिविंग रूम हैज एन AC. Both bedrooms have an AC, and in all matter of fact, if you are living in a large house with a lobby, you have a AC in your lobby also. Most hotels never used to have an AC in the lobby. Today they have it. तो इलेक्ट्रॉनिक कंजम्पशन बढ़ रहा है, और सरकार का क्लियर गाइडेंस है, इट हैज टू बी मेड ऑल इन इंडिया. बाहर से मंगा के बेचोगे तो डबल प्राइस लगेगा, बिकॉज टैक्स लगा देंगे. सो मेक इन इंडिया, हाउ डू यू प्ले? मतलब हर कोई कहता है मेक इन इंडिया इज अ ग्रेट स्टोरी, बट हियर दिस इज हाउ यू प्ले. ऐसा नहीं है कि ये वन वे अप होगा. इट विल टेस्ट माई टेम्परामेंट अगेन. शायद 6000 से वापस 5000 हो जाए, कोई बात नहीं, और ले लेंगे. ये तो मैंने आपको आइडियाज के बारे में बताया. आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अ लिटिल अबाउट वैल्यूएशन. आई थिंक दैट इज द मोस्ट सैक्रोसैंक्ट पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग. जो मोस्ट फंड मैनेजर, मोस्ट PMS मैनेजर्स, मोस्ट मनी मैनेजर्स डोंट टॉक अबाउट, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई. मैं कंफ्यूज हूँ कि क्यों नहीं बात करते लोग. आई डोंट नो आप लोगों ने कितने मैनेजर से सुना है कि आई वांट टू बाय गुड स्टॉक एट द परफेक्ट वैल्यूएशन. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ. जनवरी 2020, अगर मैं आप लोगों से कह दूं जो जनवरी 2020 में चले जाओ और सेंसेक्स 40,000 का है, अक्टूबर 2023 में 64,000 का होगा, ऑलमोस्ट 57% रिटर्न. आप लोग सब खरीद लेंगे, मैं भी खरीदूंगा, व्हाई नॉट. बट मैं आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूं जो आपके लेफ्ट तरफ डेटा है. सेंसेक्स वेंट फ्रॉम 40,700 टू 63,800. जनवरी 20 40,700, अक्टूबर 23 63,800, 57% रिटर्न ब्रॉडली. उसी टाइम पे सेंसेक्स का जो EPS है ना, अर्निंग्स पर शेयर, दैट वेंट फ्रॉम 1508 टू 2949, 95.6%.
अब अगर ईपीएस का ग्रोथ 96% हुआ है तो सेंसेक्स की का भी ग्रोथ 95.6% होना चाहिए था ना। एक्चुअली हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जनवरी 2020 में सेंसेक्स महंगा था, 27 टाइम के पी पे था। तो अब जो हुआ, या आज अगर मैं सेंसेक्स देखूं तो 21.7 टाइम्स के पी पे है। आप लोगों ने सिर्फ प्राइस देखा, 40,000 से 64,000 हो गया। मैं रिवैल्यूएशन भी बता रहा हूं आपको। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड आई विल टेल यू। दूसरी तरफ दूसरा केस स्टडी है ना, वही सेंसेक्स जून 2022 में 53,000, जो अभी 64,000। उस साल में सेंसेक्स का ईपीएस था 2455, अभी है 2949। उस टाइम पे 21.6 था, अभी 21.7 हो गया है। इसलिए अगर आप ईपीएस का रिटर्न देखो 2455 से 2949, दैट्स अ 20.1%, whereas Sensex is 20.5%. It has given more return than the EPS growth. That is because I bought it cheaper. मैं ये नहीं कह रहा सस्ता ही लेना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि महंगा नहीं लेना चाहिए कभी कभी, या कम लेना चाहिए। द बिगर मनी इज मेड व्हेन यू बाय ग्रेट कंपनीज एट ग्रेट वैल्यूएशन। और एक और केस स्टडी बताता हूँ। रोमित दादा ने 2-3 बार इसका जिक्र किया। ये जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। स्टॉक प्राइस दिसंबर 2019 में 1692, 1692 रुपए। दिसंबर 2023 आते आते 1750, 3.5% का एब्सोल्यूट रिटर्न है। तो अगर सीएजीआर में बोलोगे ना तो 1% भी नहीं है। क्या इन 4 सालों में कोटक बैंक की ग्रोथ नहीं हुई बिजनेस की? आप में से कोई मुझे बता सकता है, आपको ऐसा लगता है कि 4 साल में कोटक महिंद्रा बैंक की कोई ग्रोथ नहीं हुई है? एक्चुअली हुई है। बुक वैल्यू हैज गॉन फ्रॉम 302 टू 564, विच इज अ ग्रोथ ऑफ 86.8%। बट स्टॉक, इमेजिन करो, बिजनेस की ग्रोथ 86.8% हुई है, स्टॉक प्राइस की ग्रोथ 3.4% ही हुई। कोटक बैंक इज अ ग्रेट बैंक। मैं आप लोगों से कहता हूं, मैं कोटक बैंक का यूजर हूं। इट्स अ ग्रेट बैंक, इट इज बेटर देन एचडीएफसी बैंक in terms of quality of service, in terms of their app, in terms of everything. It is a great bank. I feel pride to be a Kotak Bank customer. I'm sure a lot of you here are Kotak Bank customers, and I'm sure आप लोगों को प्रॉब्लम ऑफ कोर्स होती रहती है, बट आई एम श्योर यू विल से कोटक बैंक इज अ ग्रेट बैंक एंड उदय भाई इज अ ग्रेट बैंकर. He is the richest banker, Asia's richest banker by the. And this richest banker has seen his wealth grow by 0% in the last 4 years. His bank has grown doubled in size. अब ये क्यों हुआ है मालूम है? क्योंकि 4 साल पहले प्राइस टू बुक 6 टाइम का हो गया था ऑलमोस्ट, जो भी 3 टाइम का हो गया. दिस शोज दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू बाय ग्रेट कंपनीज एट ग्रेट वैल्यूएशन. ये जो मैंने आप लोगों को सब बातें बताई, जो आपको थॉट प्रोसेस बताया, इन सभी को मिला के मैंने अपना फिलोसफी, स्ट्रैटेजी, आप इसको जो लेबल देना चाहें दे सकते हैं. दिस इज हाउ वी गो अबाउट इन्वेस्टिंग, and this is how you can also do it. You may not want to give money to me. If you are an investor, you may not want to invest in my PMS. You may want to do it on your own. Let me just tell you the recipe. क्या तरीका क्या है पैसे बनाने का? बहुत सिंपल है. लुक फॉर इंडस्ट्रीज दैट हैव लॉन्ग टर्म ग्रोथ. सबसे पहली, जैसे मैंने डिक्सन बताया, लॉन्ग टर्म में हमको सबको मालूम है घर में इलेक्ट्रॉनिक्स का कंजम्पशन, पर्सनली इलेक्ट्रॉनिक्स का कंजम्पशन बढ़ेगा, और वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे. डिक्सन बाय द वे इज दैट कंपनी 3.5% इबिडा मार्जिन वाली. लोग कहते हैं कि 3.5% की इबिडा मार्जिन, ऐसे ठीक है ना, अगर अर्निंग्स हर 4 साल में ग्रो, 3 साल में डबल हुई है, तो क्या प्रॉब्लम है? सो लुक फॉर इंडस्ट्रीज विद अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ. दूसरा, डू अ लॉट ऑफ इंडस्ट्री रिसर्च, कंपनी डिलीजेंस एंड रेगुलेटरी चेक्स. रेगुलेटरी चेक इसलिए क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ बिजनेसेस को रेगुलेटरी टेलविंड होती है. सरकार चाहे, जैसे डिक्सन, अगेन क्लासिक एग्जांपल, भारत सरकार, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पर्सनल मैंडेट है कि मैं सारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करवाऊं. उन्होंने माइक्रोमैक्स के ऊपर या शाओमी के ऊपर, सॉरी नॉट माइक्रोमैक्स, इट्स एन इंडियन कंपनी, शाओमी,
Xiaomi के ऊपर उन्होंने रेड करवाई. Why? Because they wanted to put this pressure कि बस make in India. I will not allow you to sell Chinese product here. Make here. You want to sell in India, make in India. ये सरकार का मोटो. That's a long-term trend. And just yesterday, the industries minister said that next year onwards we will become net exporters of mobile phones. That's how big the opportunity is. So look for industries that have long-term growth. Do a lot of industry research, company diligence, regulatory checks, and then back the right players. Sometimes it could be just one company, जैसे Dixon इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के केस में फिलहाल हमारे पास एक कंपनी है. वी विल बी एडिंग द सेकंड वन शॉर्टली, बट राइट नाउ वी हैव वन. समटाइम्स इट इज मल्टीपल. आई विल टेल यू अनदर थीम, एग्रोकेमिकल. हर कोई, हर किसान को पेड़ तो उगाने पड़ेंगे, खाना तो फैक्ट्री में बन के नहीं आएगा. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और अनाज तो फैक्ट्री में बन के नहीं आएगा. मोर पीपल, मोर कंजम्पशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, वो तो होता रहेगा, विच मीन्स एग्रोकेमिकल कंजम्पशन तो बढ़ता रहेगा. So agrochemical is one theme jahan pe we are playing it with three stocks. We have a company called Bayer Crop Science, we have a company called Dhanuka Agritech, and we have a company called UPL. UPL is the world's largest, one of the largest exporters of agrochem. Dhanuka and Bayer are domestic, but it's a thematic play. I am not risking everything on one company. The biggest is focus hard on finding growth play at value multiples. मैं धानुका एग्रीटेक मैं आपको बताता हूँ, एग्रोकेम कंपनी है, trades at a 17 time P multiple. I am very sure at a good growth, 2 years later, it will take a trade at a 22 time P multiple. I am very sure. और मैं मल्टीबैगर ऐसे ही बनाऊंगा ना, मतलब सिर्फ अर्निंग्स ग्रोथ होगी तो मल्टीबैगर नहीं बनेगा, मल्टीपल एक्सपेंशन चाहिए. ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज द एलोकेशन. और मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ. मैंने एक स्लाइड आप लोगों को जो दिखाई थी वापस लेकर जाता हूँ यहाँ पे. इसमें आप देखेंगे लेमन ट्री 33 से 99, 3x इन 2 years. अब मैं आपको बताता हूँ हाउ कंपाउंडिंग वर्कड इन माय फेवर. आई इन्वेस्टेड 100 rupees in lemon tree, that became 300. I exited lemon tree, put all that 300 back in a company called CMS Infosystems last year. CMS Infosystems has doubled in the last 1 year. नेट नेट मेरा CMS का तो कॉस्ट 100 रुपए था, वो 600 हो गया है, because 100 became 300 in lemon tree and that 300 became 600 in CMS. So why I am saying all this? मैं क्यों बता रहा हूँ 100, 300, 300, 600? Because it is very important to manage allocations. अगर डिक्सन 4% से 20% हो गया पोर्टफोलियो का, तो बुक कर लो प्रॉफिट, कहीं और रीडिप्लॉय करो ना, फिर वो भी ग्रो होगा. शायद डिक्सन गिर जाए, वापस अपॉर्चुनिटी मिल जाए, शायद ना गिरे, नो प्रॉब्लम, यू स्टिल हैव इट. Stay invested in long-term trends where earnings are growing. Don't get bothered about market momentum. It will eventually pay you. करेगा, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने मेरी पोर्टफोलियो में जितनी कंपनीज बताई, दे आर पेइंग मी. डिक्सन क्लासिक एग्जांपल, एंजल वन की मैं जर्नी आपको बता सकता हूँ. 300 रुपए पे हमने लिया, फिर 1200 रुपए हुआ, 1200 से 800 हुआ, 800 से 2000 हुआ, और 2000 से सडनली वापस 1200 हो गया. 2000 पे लोगों ने कहा बॉस यू आर ग्रेट, यू फाउंड अ ग्रेट प्ले. 2000 से जब 1200 हुआ तो लोगों ने कहा कि 2000 पे बेचा क्यों नहीं. आई सेड मेरे को नहीं मालूम था 1200 हो जाएगा. अब अगर मैं 2000 पे बेच देता और 1200 पे नहीं लेता तो लोग कहते 1200 पे लिया क्यों नहीं. आई सेड ठीक है, मेरे को एलोकेशन मैनेज करना है. आई कीप कमिंग इन, गोइंग आउट, एंड अल्टीमेटली दैट स्टॉक इज 3000 rupees नाउ. So staying invested in long-term trends is very important. डाइवर्सिफाई, नॉट टू मच नॉट टू लेस. म्यूचुअल फंड्स में ये होता है कि फंड्स के पास 100 स्टॉक्स हैं, 150 स्टॉक्स हैं, 80 स्टॉक्स हैं. दैट इज ओवर डाइवर्सिफिकेशन. उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास मान लो एक कंपनी है जिसमें आपने 100 कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाया, एक कंपनी को ज्यादा से ज्यादा 1.5% एलोकेशन दोगे ना. अब वो 1.5% वाली अगर कंपनी अगले एक साल में डबल भी होगी तो आपके पोर्टफोलियो पे तो 1.5% का ही एडिशन है. बट अगर सेम कंपनी आपके पोर्टफोलियो में 18 कंपनीज हो, 16 कंपनीज हो, 20 कंपनीज हो, तो वो कंपनी 5% होगी, और वो अगले एक साल में डबल होगी तो 5% का एडिशनल रिटर्न बनता है. सो हैविंग अ लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट. नॉट टू मच नॉट टू लेस. 6 स्टॉक का पोर्टफोलियो मत बनाओ, पर 600 स्टॉक्स का भी मत बनाओ. Lastly, something that I believe, and I will tell you
एंड यू में से कि ये हम तो अभी वही कर रहे हैं, बट लिसन टू अ लॉट ऑफ ज्ञान, लिसन टू अ लॉट ऑफ इट, बहुत ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, यूएस में ये हो रहा है, लिसन टू लॉट ऑफ ज्ञान बट विथ अ ग्लास ऑफ बियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ज्ञान डज नॉट मेक यू मनी, इन्वेस्टिंग इन द राइट प्लेस डज. इन सब चीजों को अगर मैं एक पार्लेंस में डालूं, एक मैंने कहा था फॉर्मूला ऑफ मेकिंग ग्रेट रिटर्न्स, सीक्रेट सॉस फॉर्मूला, ठीक है. मैं आप लोगों को ये फॉर्मूला बता रहा हूं आज. कुछ लोग कहते हैं गुड कंपनीज, टीसीएस इज अ गुड कंपनी, लास्ट 3 years वर्चुअली 0% रिटर्न. एचडीएफसी बैंक वेरी गुड कंपनी. हर कोई कहता है हर 4 साल में डबल होगा. पिछले 4 साल में एचडीएफसी बैंक के सेविंग्स अकाउंट ने ज्यादा रिटर्न दिया, स्टॉक ने कम. इट्स अ गुड कंपनी, आई एम नॉट डाउटिंग इट, बट गुड इन्वेस्टमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड कंपनी एट ग्रेट वैल्यूएशन. ये भूल काफी लोग भूल जाते हैं ब्लाइंडली. अच्छी कंपनी तो डाल दिया, नहीं, अच्छी कंपनी एट अच्छी वैल्यूएशन. सिंपल चीज ये है कि होंडा सिटी 15 लाख पे अच्छी है, होंडा सिटी 40 लाख पे अच्छी नहीं है. होंडा सिटी अच्छी गाड़ी है, पर क्या आप 40 लाख रुपए देंगे उसके लिए? मैं तो नहीं दूंगा, 12 भी ना दूं. गुड रिटर्न्स कहाँ से बनते हैं? गुड रिटर्न्स इज एन आउटकम ऑफ 4 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स: गुड कंपनी, ग्रेट वैल्यूएशन, रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग एंड अप्रोप्रिएट एग्जिट. लेके बैठे हो कभी निकले ही नहीं, तब क्या होगा? यस बैंक 40 रुपए का 400 होगा, 400 से वापस 40 या शायद 20. बट अगर आप 40 रुपए से 200 रुपए जाने पे प्रॉफिट बुकिंग किया, एग्जिट किया, 250 रुपए पे, 300 रुपए पे आपको लगा बहुत महंगा हो गया, निकल जाते हैं, निकल गए, मेड गुड मनी. I am telling you, lot of people, I told you right कि the bigger money is in the waiting. But गोकुल दास एक्सपोर्ट्स 1 साल पहले हमने लिया 300 रुपए पे, अभी रिसेंटली 900 रुपए मिला, 3x मिला, निकल गए 1 साल में. शायद डबल, आई डोंट नो, पर मुझे लग रहा है बिकॉज 1 साल में अर्निंग्स 3x नहीं ग्रो हुई, तो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो गया. मैंने सोचा अच्छा अपॉर्चुनिटी है, निकल जाते हैं, वी विल रीडिप्लॉय दैट समवेयर एल्स. सो ultimately, good return comes from 4 things: good companies, great valuation, regular profit booking, appropriate exit. Now, whether you are an investor, whether you are a financial advisor, this is the ultimate formula of making money. This is how we make money. इसके बाद बहुत सारे एडिशनल स्लाइड्स हैं जो आप मुझे कहेंगे, मैं आप लोगों के साथ प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा. एक फाइनल स्लाइड बिफोर आई स्टॉप माय प्रेजेंटेशन, एक फाइनल स्लाइड मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि जो मैंने सबसे पहले कहा, आइडेंटिफाई लॉन्ग टर्म ट्रेंड. लॉन्ग टर्म ट्रेंड राइट नाउ इज इंडिया विल बिकम अ 5 ट्रिलियन, 6 ट्रिलियन एंड 10 ट्रिलियन इकोनॉमी. इवन इफ यू वांट, इवन इफ यू आर थिंकिंग कि आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस पार्टी एंड बिकॉज दिस पार्टी लीडर सेज ये होगा पर ये नहीं होगा बिकॉज कंट्री में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, वो सब छोड़ो सर, हो रहा है. 2018 में इंडिया had 24% of its population as upper middle and high income people. 2030, it is forecast that more than 50% of the population will be upper middle and high income population. The long term trend is this. The long term trend is, and I will tell you, 2 days back, I was talking to Shashank Srivastav. He is the ED at Maruti Suzuki. And I was asking him, sir, why are your cars having a waiting of 12 months, 18 months, 10 months? He said, अजय प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि हम हमेशा से स्मॉल कार मैन्युफैक्चरर थे. So we used to sell Celerios and Altos and Wagonars etc. सर लास्ट 1 साल में हमने 4 नए एसयूवी मॉडल्स लॉन्च किए, पर हमने कैपेसिटी ये सोच के लगाई नहीं थी. Then he said one very important thing that made me wonder कि हम ये सब सोचते हैं कि अगले 1 साल में कितना रिटर्न बनेगा, क्या बनेगा. He told me something. He said, Ajay, I have more demand for a 16 lakh rupee car than a 6 lakh rupee car right now. And this is Maruti. They sell 24 lakh cars a month. तो
अगर ये साहब कह रहे हैं कि देश में लोग 6 लाख रुपए की गाड़ी नहीं खरीद के 16 लाख रुपए की गाड़ी खरीद, इसका मतलब ये है दैट income is without income you can't buy 16 lakh rupees. So it clearly means that income is growing and it is growing wide and large. All of us here, I'm sure, are making more money in our businesses and jobs. So this is, मैंने आप लोगों से बहुत सारी चीजें कही, बहुत सारे थॉट्स दिए. I think this is the biggest opportunity. This is, वो बोलते हैं ना, परफेक्ट रेसिपी. किसी ने मुझसे कहा, you are at the right place at the right time. I am telling you all that you are at the right place at the right time. But then the question is कि ये तो ठीक है, किस मैनेजर को पैसा दें? उस मैनेजर को पैसा दें जो आपसे रिटर्न कैसे बनता है उसके बारे में बात करें, ना कि उसकी लिमिटेड स्ट्रैटेजी 40-50 स्टॉक यूनिवर्स ये एक्सेट्रा फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया ये वो. नॉट दैट. Give money to a manager who says all my money is in my own portfolio, who shows you performance, who is showing you performance every day, who is also telling you the outcome of this performance, who is not giving you this yarn, buy and hold forever, go to sleep and hold it for 10, 20 years and XYZ stock will be 2000 times in the next 10 years and all of that. Invest with a manager who says, "Boss, I will take care of your money, and my only mandate is to make money, not to give jam, not to write books, not to talk encyclopedia thing." With that, while I of course have more detailed slides, I want to stop my presentation. We can do it more in Q&A, but before that, I want to, because I told you something, I want to show it to you again. This is my performance. I told you how I do it. I told you where it comes from. I will tell you this every week, every month. I believe in over communicating. तो मैं आप लोगों से आइडियाज भी शेयर करता रहूंगा कहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ. मैंने आप लोगों को रिसेंटली अभी बताया कि हम एग्रो केम पे काफी बुलिश हैं. वी आर वेरी बुलिश ऑन अ कंपनी कॉल्ड अमारा राजा बैटरीज. Already returned 15% in the last 2 weeks, but we are very bullish on batteries as a space. This is the performance, and I am very sure I will continue to deliver 18 to 20% CAGR in the multi cap and 25 to 28% CAGR in the mid and small cap portfolio over a 3 to 5 year period. I am very sure I will continue to deliver that. That is my presentation. I thought I will keep it short, but I have taken half an hour of your time. You have listened to it patiently. If you have any questions, please type it in the chat box. If you want to reach out to us, if you want us to reach out to you, please drop a message in the chat box. If you have questions, you can simply write it in the chat box, or you can unmute and ask. You can raise your hand. मैंने आप लोगों से काफी थॉट शेयर तो कर दिए, बट अगर इस चीज को और क्लियर बनाना है, हेजी पिक्चर को और क्लियर बनाना है, तो सवाल पूछने पड़ेंगे. एंड आई पर्सनली बिलीव इन दिस. आई से दिस टू पीपल कि अगर आप लोग सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो दो ही चीज है, या तो आपको सब कुछ समझ में आ गया है या फिर आपको कुछ नहीं समझ में आया है. तो अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे, आई विल स्लीप विथ अ लिटिल बिट ऑफ रेस्टलेसनेस. मुझे ऐसे लगेगा कुछ नहीं समझ में आया, बिकॉज इतना कॉन्फिडेंट रिटर्न बनाने के लिए हूं, पर इतना कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं हूं कि मैंने जो कहा सब समझ में आ गया हो. ये कॉन्फिडेंस अभी 100% नहीं है. So with that, I want to stop my presentation. The forum is open for questions. Please feel free to ask. Deepak bhai, you can ask. Deepak Yeah, bhai, Rakesh. yeah. Thanks, Ajay, for the presentation. It was very enriching, very enlightening, and really very to the point session that we just listened to. My simple question is that I have been investing in my clients into the PMS,
But the one doubt that comes into the mind is that at current point of time when Nifty and is at new high, what theme you suggest? Matlab, should the client invest into multi-cap kind of portfolio, or should he go for mid-cap and small cap also at this genre? ओके सो आपने जो सवाल पूछा दीपक भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स एंड थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज मैंने सोचा था मैं इसको एक स्लाइड में ऑलरेडी डाल दूंगा, बट देन आई थॉट आई डोंट नो इफ आई वांट टू कम्युनिकेट दिस आउटराइट, सो लेट मी टेक दिस. अच्छा, आपने सबसे पहली चीज तो आपने कही निफ्टी हिट अ न्यू हाई. निफ्टी हिट अ न्यू हाई टुडे, बट इन द नेक्स्ट 5 years निफ्टी विल हिट अ न्यू हाई अगेन. You Agree. can't stop Nifty from hitting a new high. And also let me tell you something very interesting, sir. 2 साल पहले ना निफ्टी 18,000 था. अगर आप अक्टूबर नवंबर 2021 में चले जाएं तो उस टाइम निफ्टी वो 17-18,000. तो 2 साल का सीएजीआर तो अभी भी सिंगल डिजिट में ही है. निफ्टी ने आपको 18,000 दिखाया, फिर आपको 14,000 दिखाया, फिर आपको 19,000 दिखाया, फिर आपको वापस 18 दिखाया और अब 20 दिखा रहा है. बट that is not all. Now, of course, Nifty is getting into a zone where it has gone up like 20 odd percent or 18 odd percent in the last few months itself. But that's not the case with the entire market. Now, let me break this further. Should investor invest in multi-cap? Should investor invest in mid and small cap? I personally think while I have a small and mid cap portfolio, I still think small cap as a category is slightly overvalued right now. उसके स्मॉल कैप स्टॉक्स के साथ हो सकता है कि अगले 4 साल में वही हो जो कोटक बैंक के स्टॉक प्राइस के साथ हुआ, कि रिटर्न अर्निंग्स तो ग्रो हो, रिटर्न ना बने क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव है. I think if you ask me personally as an investor, I would want to allocate more to mid and large caps, or so to say, create a good multi-cap portfolio. I think that is a good recipe for a decent doubling your money in the next 4 years. उसके लिए I think multi-cap better है. बाकी इन्वेस्टर की रिस्क एपेटाइट भी इंपॉर्टेंट है. इफ यू आर एन इन्वेस्टर, इफ यू से दैट बॉस आई वांट 30% रिटर्न, आई एम रेडी टू टेक एनी काइंड ऑफ वोलेटिलिटी. अगर वोलेटिलिटी ले सकते हो तो मिड एंड स्मॉल कैप इज अ बेटर स्पेस, मेक्स यू मोर मनी ऑफ कोर्स, बट एट द कॉस्ट ऑफ वोलेटिलिटी. ऑल्सो आई विल एड अनदर थिंग कि एज अ पीएमएस में क्या कर रहा हूं ना, मेरे पास अगर आज 50 लाख आ रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि मार्केट्स आर स्लाइटली गेटिंग इनटू द यूफोरिक जोन. अगर देश में 3-3.5 लाख करोड़ 6 आईपीओज में बिड हो रहा है, and that is without, Dada said 3.6 lakh crore. Dada, let me add one more thing. That is without any margin funding, without any external funding. यानी कि 3.7 lakh crore is waiting to go into Indian stocks, right? तो ये जो यूफोरिया है डेफिनेटली, पर इसीलिए हम पीएमएस में क्या कर रहे हैं कि जो whatever money we are getting in the PMS, we are deploying it in a very staggered manner, in a very opportunistic manner. कि किसी दिन कोई स्टॉक नेगेटिव में मिल गया तो ले लिया, किसी दिन कोई मार्केट अगर थोड़ा गिरा तो ले लिया. तो देखो, मैं बड़ा बिलीवर हूँ भाव का. मार्केट में भाव का खिलाड़ी होना इंपॉर्टेंट भी है. तो आई बिलीव अ लॉट इन प्राइस, एंड आई थिंक टाइमिंग करके अगर इन्वेस्ट करे अगले 4-5 महीने में स्टैगर्ड वे में, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर. In fact, I just Thank you. wanted to. हेलो सर. Yeah, Prashant, please go ahead. Bandiya ji, please go ahead. या मेरा क्वेश्चन है सर कि अभी इन्वेस्टर को जो इन्वेस्ट होने के बाद कितने साल का वेटिंग करना चाहिए, ये बोलना चाहिए. और अपॉर्चुनिटी तो आप देखेंगे, लेकिन वो उसके हिसाब से उसने डाला हुआ पैसा कितना देर रहना चाहिए. और दूसरा क्वेश्चन था कि पूरे प्रोडक्ट्स जो है 10-15 मिनट. पाइपर सेरिका के, उसके बारे में पूरा डिटेल में जानकारी मिलना चाहिए. तो प्रसन्न राज जी, लेट मी टेक पहला वाला क्वेश्चन ले लेते हैं पहले कि कितना वेट करना चाहिए. मैं किसी भी इन्वेस्टर, देयर आर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आल्सो ऑन दिस फोरम लिसनिंग, आई वांट टू टेल वन थिंग कि अगर आप इक्विटी में पैसा डाल रहे हो मेरे साथ या किसी भी और के साथ, कुछ लोग कहते होंगे कुछ लोग नहीं कहते होंगे, पर
मेरे साथ डालो, कहीं भी और डालो, एटलीस्ट 3 साल तो देना। 3 साल तक मैनेजर का जाके गला मत पकड़ना, अनलेस बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस है तो डेफिनेटली पकड़ो, पोजीशन काट दो, निकल जाओ, कहीं और जाओ। बट अदरवाइज 3 साल तो देना ही। 3 साल से कम में तो सर, अगर मैं कह रहा हूँ ना, मैं 17-18% का परफॉर्मेंस डिलीवर करूंगा, तो मैं मिनिमम 3 साल मांग रहा हूँ उस चीज के। उससे कम में मैं क्या परफॉर्मेंस डिलीवर करूंगा मुझे भी नहीं मालूम। ओ, और दूसरा जो, दूसरा दूसरा जो सवाल आपका था, हमारे पास 3 अलग अलग कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। एक तो पीएमएस है, 50 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। वहां पे 2 स्ट्रैटेजीज हैं। मल्टी कैप एक अलग स्ट्रैटेजी है, मिड एंड स्मॉल कैप एक अलग स्ट्रैटेजी है। सर लेट मी रिपीट, मल्टी कैप एंड मिड एंड स्मॉल कैप, फर्क सिर्फ मार्केट कैप का है। स्टॉक सिलेक्शन अलग नहीं है। वो जो लोग कहते हैं ना मेरी ये अलग स्ट्रैटेजी है, हमारी अलग नहीं है। मल्टी कैप में सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स भी होंगे, मिड एंड स्मॉल कैप में सिर्फ मिड और स्मॉल है। मल्टी कैप और मिड कैप स्मॉल कैप के बीच में 60-65% का ओवरलैप है। तो फिलोसफी सेम है। ये है पीएमएस। दूसरा है स्मॉल केस, जहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए का होता है। वहां पे हमारे पास 3 पोर्टफोलियोज हैं, मिड स्मॉल, मल्टी कैप एंड लार्ज कैप। तो ये 3 पोर्टफोलियोज हैं। ये 3 पोर्टफोलियोज में आप इक्वली डिवाइड करो, सिर्फ 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करो। पर इसके लिए ये सारा आपके डीमैट अकाउंट में या आपके इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट में होगा। Investor needs to have a demat account with one of the 14 brokers of small case। small case जो एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे उनके 14 ब्रोकर पार्टनर्स हैं। तो ये दूसरा। तीसरा, अगर आप एनआरआई हो, अगर आप नॉन इंडियन हो, अगर आप एक एडवाइजर हो, आपके एनआरआई इन्वेस्टर्स हैं, नॉन इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, गोरा अंग्रेज, राइट, उनको आपको इंडिया में इन्वेस्ट कराना है और डॉलर में कराना है। पीआईओ, ओसीआई, नो आधार, नो पैन, नथिंग, उनको इंडिया में इन्वेस्ट कराना है, डॉलर में कराना है। देन वी हैव अ फंड इन मॉरिशस जिसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट $1 लाख का है। और पोर्टफोलियो वहां पे भी सेम है, मैंने परफॉर्मेंस भी आपको दिखाया, पिछले 4.5 साल का 17% का सीएजीआर है। पोस्ट फीस एक्सपेंस एंड फंड लेवल टैक्स 10% लॉन्ग टर्म, 15% शॉर्ट टर्म, देने के बाद 17.5% का सीएजीआर है इन डॉलर्स। तो अगर आपके डॉलर इन्वेस्टर हैं और एनआरआईज हैं, तो दैट इज अ ऑफशोर फंड। ये 3 हमारे प्रोडक्ट्स हैं। बाकी आप अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए, आई विल। या डेफिनेटली सर। और आपका एक स्पेशल प्रोडक्ट था वो जो 25 लाख का। सर दैट इज अ डिफरेंट कैटेगरी ऑल टुगेदर। वो एक एंजल फंड है जो हाँ, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है। एड्रेस में, हाँ। तो वो एआईएफ में आता है। वो एआईएफ है, वो अच्छा, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है। हाँ वो फिलहाल अभी फंड क्लोज्ड है, वो हम हाँ, 2 महीने बाद फिर से ओपन करेंगे। ओके। और दूसरी ये बात था कि अभी आपने बताया जैसा मेरे जैसा नया पीएमएस डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उसने स्मॉल इंट्रोडक्शन मेरे क्लाइंट को आपके बारे में कैसा देना चाहिए वो भी आपने बताना चाहिए, क्योंकि हर बार कांटेक्ट में अब जब मुझे कॉन्फिडेंस लगेगा कि मेरा क्लाइंट सुनने लायक है, कि अभी उसको लग रहा है कि इसमें इंटरेस्ट है और मैं सुनूंगा, लेकिन उसके पहले जो आपका इंट्रोडक्शन है वो कैसा देना, वो भी आपके लोगों के साथ थोड़ा मुझे बताया जाए तो अच्छा है। और मुझे इमीडिएट रजिस्ट्रेशन करना है क्योंकि मेरा पीएमएस क्लियर हो चुका है। डन सर। तो कुछ शॉर्ट इंट्रोडक्शन नोट मैं आपको भेज दूंगा, भिजवा दूंगा मेरी टीम के थ्रू, डोंट ओके वरी। बट ओके अगर आपके पास पोटेंशियल पीएमएस इन्वेस्टर्स हैं, तो आप उनको एक व्हाट्सएप भेजेंगे, मैसेज भेजेंगे या कुछ भेजेंगे, उससे बेटर है आप उनको एक कॉल पे ले आइए। फोन कॉल चाहिए तो फोन कॉल, जूम कॉल चाहिए तो जूम कॉल, आई एम देयर। ओके, आई थैंक यू टॉक सर। टू एवरी इन्वेस्टर। और लॉट ऑफ पीपल देन आस्क मी, सर आपको अगर इन्वेस्टर से बात करनी है तो कितना टाइम का कॉल होना चाहिए? मैं 20 जो मैंने आप लोगों को अभी कहा वो मैं 20 मिनट में कह सकता। तो ओके आई नीड 20 मिनट्स टाइम विथ योर इन्वेस्टर एंड आई विल टेल देम हाउ आई मेक मनी फॉर माई सेल्फ। ओके, थैंक So यू। I will now just go to the question answer session. So first question was basically योगेश जी का था. So योगेश जी आपने पूछा था कि what are the fees and charges for PMS and what is the minimum investment amount. So let me take you from the compliance angle, from the regulations. Every PMS has to be 50 lakhs rupees. Without 50 lakhs rupees, you cannot start a PMS. And PMS दो प्रकार की होती है. एक है फिक्स फी और एक है प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल. On a fixed fee model,
there is a fixed management charge, which is typically between 2 to 2.5%. And this is excluding brokerage. मतलब 2.5% अगर मैनेजमेंट फी चार्ज होती है तो एडिशनल देयर इज अ 10 पैसा का broker which is being charged. But since Piper also has a 1 lakh ticket size, 2 lakh, 2 lakh. obviously 2 lakh small case ticket size. So that is also you can consider. Now coming to the second question, Sandeep Jay, what is the AUM of two PMSs? With Ajay, we'll be able to give you. Our PMS, I mean, our public market pool all put together currently is about 850 crores of AUM. 850 crore. एक चीज यहाँ पे मैं संदीप सर आपको मैं बताऊंगा बिकॉज वी कीप टॉकिंग एंड थिंग्स पीएमएस का बिकॉज वी वांट टू आई नाउ सिंस आई हैव नाउ जॉइंड एपमी एज अ ट्रेनिंग मेंबर आई विल डू लॉट ऑफ इवेंट्स विद लॉट ऑफ थॉट लीडर्स जैसे आई लाइक अजय वेरी मच एंड समवेयर मेरे को लगता है कि अजय का थॉट प्रोसेस बहुत क्लैरिटी ऐसे भी अभी 2-3 और भी लोग होंगे जिसके साथ हम लोग ऐसे सेशंस करेंगे क्योंकि 20 साल से आप लोग म्यूचुअल फंड सुनते यू नो हाउ टू सेल म्यूचुअल फंड्स और व्हाट इज दैट सो ये पीएमएस का भी हम लोग रेगुलर बेसिस में करेंगे बिकॉज सेलिंग अ पीएमएस इज नॉट द सेम एज म्यूचुअल फंड सो कमिंग टू ऑब्वियसली 850 करोड़ इज इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखिएगा पीएमएस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एयूएम इट डज नॉट मैटर एनीथिंग व्हाट इज एयूएम एज आई हैव सेड 40,000 करोड़ में देख के आप जाएंगे उसमें 10% का नेगेटिव रिटर्न आएगा उससे बेटर है 600 करोड़ का यूएम में जाइए और 20% रिटर्न कमाइए बिकॉज इन अ पीएमएस द स्ट्रक्चर ऑफ द रेगुलेशंस ऑफ पीएमएस हैज गॉट नथिंग टू डू विथ एयूएम इनफैक्ट जितना बड़ा यूएम होगा उतना उसके लिए डिफिकल्ट होता है डिसीजन लेना एंड दिस इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशंस प्लीज अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी गुड पॉइंट टू अंडरस्टैंड पीएमएस shows popularity AUM in PMS shows popularity. It does not show any other thing because it does not contribute to the performance of the portfolio. It only shows that काफी लोग उनको खरीद चुका है, but that does not like a guarantee. Now, I want to because what you said, Dada, I want to add something, and I am apologizing before I say it. I will be very crude with what I am saying. A lot of people ask this ki why PMS, why not mutual fund, and I say that boss, that's the wrong place to start. दोनों में कंपैरिजन नहीं है दोनों में कंपैरिजन इसलिए नहीं है क्योंकि जिसके घर में एक BMW है या जिसके घर में एक रेंज रोवर है ना उसके घर में शायद एक बलिनो भी है बिकॉज वो जब दिल्ली में खान मार्केट में निकलना है तो मैं रेंज रोवर लेके निकल नहीं सकता तो गली में घुस ही नहीं पाएगी तो इसलिए मैं रखता हूँ एक छोटी गाड़ी जिसके घर में आज एक एसयूवी है ना उसके घर में आज एक हैचबैक भी है जरूरत पड़ती है कहीं कहीं पे या जिसके पास एक गाड़ी है उसके पास एक टू व्हीलर भी है राइट व्हाट एम आई सेइंग राइट आई एम सिंपली सेइंग ये दोनों को एग्जिस्ट करता है अगर एक इन्वेस्टर है आप एक इन्वेस्टर हैं 2 करोड़ का आपका पोर्टफोलियो है कैपिटल है वो सारा अगर आपने 2 करोड़ म्यूचुअल फंड में डाला हुआ है तो देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू आप कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए और फिर आपने ही सिंगल प्रोडक्ट सिंगल कैटेगरी सिंगल इन्वेस्टमेंट रिस्क ले लिया ठीक है तो दैट इज पॉइंट नंबर 1 दोनों में कंपैरिजन नहीं है पॉइंट नंबर 2 some people say why PMS and then lot of people ask AUM जैसे दादा ने अभी कहा कि more AUM shows popularity let me tell you something PMS है क्या PMS और म्यूचुअल फंड में फर्क इतना ही है कि PMS एक ज्यादा क्यूरेटेड प्रोडक्ट है ठीक है it is for specific class of people who can afford to invest more than 50 lakh rupees now what is the curation मतलब जो म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर है वो उसके फंड के हर इन्वेस्टर से पर्सनली बात नहीं करता है पीएमएस के फंड मैनेजर मैं मेरी टीम मेरे फाउंडर अभय हम हमारे इन्वेस्टर से 1-on-1 बात करते हैं एडवाइजर से 1-on-1 बात करते हैं रेगुलरली बात करते हैं मंथली कम्युनिकेशन करते हैं स्टॉक लेवल अपडेट्स देते रहते हैं तो ये एक बड़ा क्यूरेटेड प्रोडक्ट है ठीक है अब अगर क्यूरेटेड है नीश है वो नीश और क्यूरेटेड को जनता क्लास कैसे बनाऊं मैं मतलब हाउ डू आई हैव अ पीएमएस विद 15,000 crores then it is really mutual fund that you are operating as a PMS तो अपने आप में क्यूरेटेड कैटेगरी है तो वहां पे अगर 10,000 करोड़ AUM है 15,000 करोड़ AUM है तो फिर तो डिफरेंस ही क्या है मतलब ये तो ऐसा हो गया आपके पास BMW आपके बाजू में 10 गाड़ी सारी BMW खड़ी है तो आपके BMW में क्या फर्क है फिर तो आपको पोर्श खरीदना पड़ेगा ना
because then you will want to go to the next level. So I will, at Piper Serica, I will keep it as a very boutique, as a very niche approach. हमारा approach जनता क्लास नहीं है, और पीएमएस एज अ प्रोडक्ट भी जनता क्लास नहीं है. मतलब फिर क्या, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग 10,000 crores? What's the, in fact, what is the point of having 10,000, 15,000, 30,000 crore of AUM and then underperforming for like 3 years, 5 years, 7 years? मतलब you could be a great fund manager, you could be Bharat Shah, you could be Saurabh Mukherjee, you could be ABCDEFG, you could be anyone, बट परफॉर्मेंस नहीं है और 10,000, 12,000, 15,000 AUM है, तो that's a problem. I think that's genuinely a problem. No, very well said. Ayan. So next question, निखिल भाई, I don't know, डर लग रहा है, मतलब क्या क्वेश्चन पूछने से डर लग रहा है या मार्केट को डर लग रहा है, वैल्यूएशंस का डर लग रहा है? अगर वैल्यूएशन से डर लग रहा है, नाउ तो यू आर गेटिंग फियरफुल अबाउट द वैल्यूएशन एवरी 3 years 4 years व्हेन द हाई, बट मार्केट में जिस तरह से लिक्विडिटी आ रहा है, मेरे को लगता है कि अगला एक एवरी 6 months विल गेट डर लगेगा, बिकॉज जिस तरह से वैल्यूएशंस, एक्सपेंशन मल्टीपल्स काम हो रहे हैं, बिकॉज वी हैव नेवर हर्ड अबाउट अ नंबर. जैसे अजय के साथ एक दिन डिस्कशन हो रहा था, मारुति के 9,000 आउटलेट्स, अगर एक आउटलेट से भी एक एसयूवी का डिमांड होता है तो 9,000 गाड़ियां हर महीना उसकी रिक्वायरमेंट होगी. सो नंबर्स का कोई मतलब, देयर इज नो सैंक्टिटी इन द नंबर्स. मतलब ऑल दीज कंपनीज व्हिच हैज एक्सपेंडेड इन एक्सपेंशन, उसका नंबर क्या खेलेगा, नोबडी नोज. सो मतलब ओनली थिंग इज दैट इट विल हैव अ वेरी अपसाइड अपॉर्चुनिटी. नाउ कमिंग टू दिनेश भाई क्वेश्चन, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड लॉट ऑफ यू नो मी एज अ पर्सनली, दैट आई एम एन academic and I'm doing my research also. Globally, post World War II, when the economies, or when the thought process, when the global economy, हम जिसको कहते हैं, which went from from an old system to a new system. Election result has got nothing to do with investment outcome. ये globally proof है. It's not only applicable in India, it is applicable globally. मैं आपको छोटा सा एक इंसिडेंट बताता हूँ, since I read history and I read economics. 2016 में जब यूएस का इलेक्शन हुआ था ना, when Hillary Clinton was contesting with Donald Trump, everybody was thinking Hillary Clinton will win and Donald Trump is basically he's a idiot. मतलब that was one of the statement with one of the democratic leader. It's not my statement. And everybody thought कि Donald Trump आएगा तो पूरा ग्लोबल इकोनॉमी में एक तहलका मच जाएगा, अमेरिका will go down. But हुआ उल्टा. Donald Trump won, and the next 5 years was the golden history of the entire US economy. So दिनेश भाई, ये हिस्टोरिकली प्रूव है कि ग्लोबली इन्वेस्टमेंट आउटकम एंड पॉलिटिकल इवेंट हैज गॉट जीरो कोरिलेशंस. व्हाई एम आई यूजिंग द जीरो कोरिलेशंस? बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स आल्सो. सो कोई रिलेशंस नहीं है, इट जस्ट टेम्पोररी एक सेटबैक होता है. दिस इज अ टेम्पोररी क्वेश्चन. कल अगर आपको याद होगा, जब मोदी जी 2019 में वापस आए थे, देयर वाज अ 20% पुल बैक ऑन मेजर सेक्टर. ऐसा नहीं कि थम्स अप है, इट्स ऑल इन आवर माइंड. It's all, because I was talking to one of the fund manager 2-3 दिन पहले, and somebody was telling me that आज के दिन में जितने भी सारे डेवलपमेंट हो चुका है, यहाँ से रोल बैक इन हो सकता है. So there is no chance if tomorrow anybody comes, even अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, I cannot say that GST को मैं रोल बैक करूंगा. या हो सकता है अयोध्या राम मंदिर या 370, these are political events. There are two kind of events which happens: economic event, political events. You try to build an economic consensus by hearing a political news. आपको लगता है, but दोनों अलग होता है. पॉलिटिकल न्यूज पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, इकोनॉमिक न्यूज अपने हिसाब से चलता है. सो टिपिकली नो इकोनॉमिक एक्टिविटीज और पॉलिसी विल बी वाइल्ड बैक, जिसके कारण हम बोल रहे हैं कि इतना एक्सपेंशन, इतना. दीज आर ऑल इकोनॉमिक इवेंट. So don't create an economic opinion through a political consensus, or don't create an economic consensus with a political event. ये कभी काम होता नहीं है globally, anywhere in the country. Let me also add, Dada, to your comment. Let me take you guys back a few years. थोड़ा साल पहले, जब we had a very legendary cricket player. I am sure we are all cricket lovers. We had a very legendary cricket player, Sachin Tendulkar, and I personally remember the day Sachin Tendulkar played his last match in Wankhede. People had gone crazy. I mean, forget stadium. The city was literally outside Wankhede to bid farewell to Sachin Tendulkar. उस टाइम पे बहुत लोगों ने कहा कि सचिन तेंदुलकर इतना लेजेंडरी प्लेयर था, ऐसा प्लेयर वापस कभी होगा नहीं.
और आज के डेट में आई एम श्योर ये कोई नहीं कह सकता, बिकॉज वी हैव प्लेयर्स लाइक विराट कोहली, वी हैव प्लेयर्स लाइक रोहित शर्मा, वी हैव प्लेयर्स लाइक धोनी। और अब लोग ये कहेंगे कि अगला रोहित शर्मा नहीं आएगा, अगला धोनी नहीं। लो धोनी जब रिटायर हुआ था फ्रॉम हिज वनडे एंड T20, तब लोगों ने कहा कि जब वो कैप्टनशिप से रिटायर हुआ था तब लोगों ने कहा कि ऐसा कैप्टन माही कूल जैसा कैप्टन तो होगा नहीं। बट रोहित प्लेड हिज रोल, विराट इज प्लेइंग हिज रोल। सो मतलब टैलेंट की इंडिया में इनहेरेंटली कोई कमी नहीं है। दैट्स वन थिंग दैट आई एम वांट टू से हियर। दूसरा, ये जो सरकार इलेक्शन इलेक्शन यूं हुआ तो आउटकम यूं हुआ तो, ये क्वेश्चन मुझे पिछले 2 हफ्ते में आई काउंटेड यस्टरडे 17 टाइम्स आया, आज 18th टाइम है। Let me, and I am apolitical. I am not a fan of any political party. I am not a fan of any political person, though I have a surname that I carry which resembles and which matches with the prime minister. And a lot of people say I wear clothes attire like him sometimes, which is okay. But I am apolitical. हैविंग सेड दैट, लेट मी आस्क यू, आप अगर कोई भी ये पूछ रहा है कि पॉलिटिकल आउटकम कुछ अलग हुआ तो क्या, अगर ऑपोजिशन पावर में आ गई, लेट मी आस्क यू दिस सिंपल क्वेश्चन सर। आप जब वोट करने जाओगे तो किसको वोट करोगे? ऑपोजिशन में तो एक है ही नहीं ना, एक तो है ही नहीं। मतलब अगर आप ऑपोजिशन की बटन दबा रहे हो तो कांग्रेस को दे रहे हो या ममता दीदी को दे रहे हो या एनसीपी को, किसको दे रहे हो वोट? मेरे को नहीं मालूम। अगर मैं ऑपोजिशन की बटन दबाऊंगा तो मैं किसको दूंगा? दैट इज वन। सेकेंड पर्सपेक्टिव, 10 साल हो गया इस सरकार को, ब्रॉडली फ्यू मंथ्स में 10 साल हो जाएगा। क्या 10 साल में आपको टेंजिबल चेंज दिखा? क्या 10 साल में आपको टेंजिबल ग्रोथ दिखा कंट्री में? क्या आपने 10 साल पहले सोचा था कि few hundred kilometers of roads constructed every day, क्या ये होगा? 10 साल पहले किसी ने सोचा था क्या कि अगर कुछ वर्कर्स कहीं किसी टनल में ट्रैप हो गए तो सरकार अपने मतलब पता नहीं दुनिया के कहाँ कहाँ से एक्सपर्ट्स और मशीन्स ले आएगी उन वर्कर्स को, वर्कर लेबर क्लास पीपल को बचाने के लिए? 10 साल पहले मैंने ये केस कभी नहीं सुना था। व्हाट आई एम सिंपली ट्राइंग टू से, जो है वो अच्छा है तो देश, हमारे देश और हमारे देश के देशवासी वोटर्स वो तो जानते हैं ना, वो तो अच्छा बुरा परखना जानते हैं। वाई विल दे वांट टू चेंज? और अगर वो होना भी है, वो होना भी है, लेट्स से, लेट्स टेक अ डे कि चलो लोग शायद इस सरकार से इनके रिलीजियस माइंडसेट से थोड़ा तंग आ गए होंगे। तो अगर वैसा कुछ होना भी है तो महीने में दिसंबर में पता चल जाएगा ना, 5 स्टेट के इलेक्शन रिजल्ट्स आएंगे तो उससे पता चल जाएगा ना कि द सेंट्रल पार्टी कितने पानी में है। सो आई थिंक while Dada you answered it in a more technical perspective, I thought I will give my personal perspective here कि मुझे ऑनेस्टली नहीं लग रहा कि सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी चेंज आएगा, मुझे नहीं लग रहा। और अगर आना होता तो एग्जिट पोल्स में दिख जाता। अच्छा, ये 5 स्टेट के एग्जिट पोल्स इतने सुंदर आए हैं ना कि मतलब वर्चुअली इट इज 3-0 बीजेपी फॉर द 3 स्टेट्स, MP, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़। सो नॉट टॉकिंग टू मच पॉलिटिकल बट सम फूड फॉर थॉट। Dada Saab ji, you have asked me directly that Infosys co-founder Narayan, that's a fraud, huh? That's a deepfake AI. That's a deepfake AI, and नारायण मूर्ति's family office has very well clarified. उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप फेसबुक में देख रहे होंगे ना, that is an नारायण absolute नारायण fake. मूर्ति तो कह रहे हैं कि आपको ज्यादा काम करना चाहिए, फिर वो AI क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, as per there was something which was happening. I know, They I know. were there was a company which was doing. Deepak bhai, obviously, you know, Prachi or Shivam will get in touch with you for empanelment process. Dinesh bhai, what is a small case minimum amount and charges? Ajay. Small case minimum is 2 lakh, and fee structure is there is a one-time onboarding fee of 590 rupees and then 2.5% per annum on the average AUM. My only point all of you is that please ये product को ना seriously देखो आप, because this is a beautiful product which is emerging. Because you know, अभी मैं I will जैसे अजय जैसा there is a very bright fund manager which I am identified. मतलब जैसे होता है ना रामदेव जी, you know, रामदेव जी तो गुरु है, भारत भाई लोग तो गुरु है।
ये लोग 20 साल से राज किए हैं इंडस्ट्री में, अगला नेक्स्ट 20 साल के लिए लोग पूछते हैं ना, अगला 20 साल के लिए कहाँ पे पैसा डालें। तो जैसे अजय इज वन ऑफ देम, देयर वाज अनदर पर्सन 2-3% जिसको हम लोग लेके आएंगे, एंड आप लोग सुनेंगे एंड यू विल अंडरस्टैंड लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। सो स्मॉल केस में ये एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मतलब आई सजेस्ट, आई बाई स्मॉल केस ऑलमोस्ट एवरी मंथ 1-1.5 लाख का, बिकॉज इट हेल्प्स मी टू बिल्ड अप एन इक्विटी पोर्टफोलियो, और कुछ नहीं, मतलब बिकॉज मैं 50 लाख हर बार अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। सो 1 लाख रुपीज मंथली इज अ वेरी गुड ऑप्शन। और इक्विटी का टेस्ट जो होता है ना, जितना मेच्योरिटी लेवल बढ़ता है ना, जैसे होता है ना, it is a so direct equity is a big boys game, and it is a जैसे you income भी grow होता है, maturity भी grow होता है, equity का perception भी होता है। There is a very good book I will share, that why do Warren Buffett did not buy mutual funds if mutual fund was such a good product, because it has got nothing to do with good bad, और जैसे हम लोग इसको करते, because this is a good time that आप लोग पूछते हो ना कि कितना दिन के लिए हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। If the same question would have been a mutual fund session, if I would have been an investor, if I had asked you कि कितना दिन के लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करेंगे, तो आप बोलेंगे ना जितना दिन तक पैसा है उसके लिए इन्वेस्ट करो। सो यू इन्वेस्ट व्हेन यू हैव मनी एंड यू सेल व्हेन यू नीड मनी, खत्म। टाइम इज इरिस्पेक्टिव इन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो यू इन्वेस्ट व्हेन यू हैव मनी एंड यू सेल इन्वेस्टमेंट। सो ओके संदीप जी, yes, I understood that to your question, which is like was to inform others, yes, PMS में don't go by AUM, ये मेरा सबसे बड़ा इरिटेशन है। और आप लोग जो भी जितने भी सारे लोग who has taken training with me, I don't want you to understand product negatively. Because परसों जिस दिन मैं थोड़ा गिर के मेरा हाथ लग गया था, I was with SEBI, and 8 तारीख को from APME I am going to present something for the SEBI, where I have told actually Sanjay, सुजय जी उस दिन संजय जी जो लिखे थे, you need more distributors education. So this kind of education is important. इसको आप समझिए कि अगला नेक्स्ट 10 साल इस प्रोडक्ट के बारे में somebody is taking initiative to train you. निखिल भाई यू कैन लिसन टू मी फॉर होल नाइट, बट अगर आपने हमारे ट्रेनिंग सेशन में एक बीच में यू हैव नॉट टेकन अ पार्ट ऑफ माय ट्रेनिंग सेशन, तो मैं अभी फोन करता हूँ, अभी ट्रेनिंग सेशन में आइए मेरा, तो अभी आपको छोड़ेंगे नहीं। राकेश भाई, यू आर लाइक एन एडल्ट, आई विल नॉट लीव यू, हाँ, सो यू हैव टू बी पार्ट ऑफ माय ट्रेनिंग सेशन। मीठी मीठी बातों में कुछ नहीं होता है, मतलब यू हैव टू कम टू माय ट्रेनिंग सेशन, और आपको सर्टिफाई करना मेरा काम है। Ajay bhai, one more question I want to ask. With who is our custodian currently with, matlab, with Very whom our good, demat very account? good. So we have two custodians, Kotak and Nuvama, Edelweiss. Okay, got it. I mean, Thank you. again, I don't know why, but you have very pertinent and interesting questions. I believe in quality of service. That I think is sacrosanct. And इसीलिए हम इंडस्ट्री में भी जब हम हमारे वेंडर्स के साथ भी काम करते हैं, हम I want to work with the best vendors. So I have Kotak as our prime custodian, Nuvama as our prime custodian. Even on the broking side, I work with Kotak, Nuvama, and Dam Capital. These are the companies that provide us access in terms of managements and information and content and data, and also give us best rates in terms of buying and selling shares, and also make sure that the timing, वो buying at the day's low, buying at below VWAP, वो सब करते हैं वो. So we work with best quality vendors. You will not have to worry about that. I think we are good to go. So, before we end the discussions, Kotak के बारे में काफी चर्चा हुआ है. I started off my discussions with Kotak. Ajay also had a very detailed analysis on Kotak. Let me tell you, there is a joke with Kotak. Why is the stock price not growing and why is the book value growing? सब कुछ इकोनॉमिक्स से नहीं होता है, कुछ कुछ चीज we have to also relax our brain, because Friday night है, 9:30 बज रहा है, आप लोग 59 people sitting down. So there is a joke कि उदय कोटक जी इतना टफ है ना, वो 10,000 करोड़ का लोन देने के लिए पूरा एंटर मुंबई शहर का मॉर्गेज मांगता है. There is a joke in the Mumbai banking cycle that Uday Kotak ji is such a strict guy. अगर वो उसको किसी को 10,000 करोड़ लोन देना है ना, वो पूरा मुंबई शहर को मॉर्गेज में मांग लेगा, तो इसलिए कोई जाता नहीं. इसलिए बुक वैल्यू इज वेरी हाई, बिकॉज बुक वैल्यू इज क्रिएटेड व्हेन यू हैव गॉट लेस ऑफ बैट, less of liability and less of things. So
Thank you, Ajay. I want to address one question Anil ji has asked. Is your PMS doing best in respective category and time period? Anil ji, let me tell you something. I will always aspire to be in the top quartile, and irrespective of that, I don't know if I will be the best, because मेरे लिए बेस्ट के लिए क्या स्टैंडर्ड रखूं वो समझ नहीं आता है. मेरा एक ही स्टैंडर्ड है सर, दैट आई विल ऑलवेज डिलीवर परफॉर्मेंस. बिकॉज बहुत अच्छा, मतलब एग्जांपल तो वोक्सवैगन का गाड़ी बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत बहुत अच्छा गाड़ी है. बीएमडब्ल्यू का गाड़ी बहुत अच्छा है, बट लोग चाहते तो, मतलब देश का 50% गाड़ी तो मारुति बेचता है. तो अब वो क्यों बेचता है? क्योंकि वैल्यू फॉर मनी है, इजीली एक्सेसिबल है, उसके सर्विस सेंटर्स, उसके शोरूम्स, उसके स्पेयर पार्ट्स. तो मैं भी सोचता हूँ सेम चीज कि बस इन्वेस्टर को वैल्यू फॉर मनी चाहिए. इन्वेस्टर अगर मेरे को 2.5% फीस देगा तो मेरे से एक्सपेक्ट करेगा ना कि मैं बेंचमार्क को 4-5% से तो बीट करूँ लॉन्गर टर्म में. तो आई वॉन्ट टू बीट द बेंचमार्क बाय 4 to 5% एटलीस्ट ओवर अ 4 to 5 year पीरियड. Keep my cost as minimal as possible, and at the end of the day provide best quality of service. जो भी है, जैसे मैंने आपको मेरे विनिंग आइडियाज बताए तो साथ में लूजिंग आइडियाज भी बताए. ट्रांसपेरेंटली communicate. When I have a stock portfolio of 22 companies, I am bound to make mistake in 3. I will rectify those mistakes quickly, and you will end up making very good money when you are with me. That is my simple message to you all. With that, I personally And thank you all for joining me. Sir, Dada, over sir, to मैं you. just एक clarify yeah, करना. sorry. Yeah, I Anil just bhai, please go ahead. जी, I just wanted to clarify one thing. I wanted to know in terms of return only. Doing best means best return, and in that, what I hello. Yes, Yeah, sir. yeah, You're Anil bhai, listening. Anil ji, you are audible. Yeah, in that, just because nobody does that, I just wanted a simple comparison of 3 best players. You must be among the 3 best players in the respective category. I mean, small and mid cap and large cap, and in the same time period. Then the comparison can be fair. In that scenario, just I wanted a comparison of 3 best players, or you being among the that is just I wanted to So know. I will take this as a feedback. I will create a comparison of good managers that in my terms, I find them good, and I will send that comparison to you. But let me tell you something very interesting. So there is a platform called Small Case. Small Case पे approximately 600 मैनेजर्स हैं. हर मैनेजर का ऑन एन एवरेज 3 पोर्टफोलियो है, यानी कि 3 स्ट्रैटेजीज हैं. तो हो गई 1800 2000 स्ट्रैटेजीज. उसके अलावा हजारों म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजीज हैं. उसके अलावा पता नहीं 1-2 हजार कुछ हजार पीएमएस स्ट्रैटेजीज हैं. हमारा एक पोर्टफोलियो है ईडी प्लस. ईडी प्लस का लास्ट 3.5 साल का, सिंस इंसेप्शन 3.5 साल हुए हैं. इस पोर्टफोलियो का 3.5 साल का सीएजीआर पोस्ट फीस इज 50.3%. With that performance, I will rank in the top 1% managers of the country. I think Very there is a quick silence. very Huh. excellent. No, excellent. Uh, in fact, But I will give you the comparison details, Anil ji. I and will I am share not that with you. asking about all the fund managers. I am No, that's only okay, sir. asking You about should ask. आप जो सवाल पूछ रहे हो वो the सही है. PMS. Yeah. And शुरू में अगर आपने देखा हो तो बराड़ साहब ने वो कंपैरिजन बड़ा अच्छा दिखाया था. एक शायद लार्ज कैप के लिए different PMS, how they are doing for last 3 years, 1 month, 6 months, 3 years. That was a very good comparison. That is how I just wanted. Absolutely. So, before we end, Ro Sandeep sir, Romit आप ji, कुछ just बोलना चाहें? one thing, Yeah, just yeah, please, please. Ajay ji, there's one issue which I've been trying to raise. It's basically the DMAT का जो mandatory AIF regulation में SEBI ने किया है. Now for the angel fund, sir, there is no in that circular there is no exception. मैं बहुत दिन से शिवम को भी बोल रहा हूँ, मैं रोमित जी को भी बोला था. So since you are on the line, I thought I'll mention it to you that
we need to, get a clarification now itself, नहीं तो बहुत problem हो जाएगा सर. नहीं सर, क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए। सेबी ने कहा है डीमैट होना चाहिए तो डीमैट होगा, पर उसके लिए टाइम है ना हमारे पास। हमारा टाइमलाइन मार्च का है। अक्टूबर वाला टाइमलाइन वाज फॉर फंड्स दैट हैव 500 crore ऑफ AUM और मोर देन 500 crore ऑफ AUM। फॉर फंड्स दैट हैव लेस देन 500, उनका टाइमलाइन मार्च 24 का है। उससे पहले मैंने आइजिन क्रिएशन, बिकॉज अगर मेरे को डीमैट में यूनिट्स एलोकेट करने हैं, जैसे आपने अगर आपके एसओए स्टेटमेंट देखा होगा तो उसमें कुछ कंपनीज है जिनका आपके पास यूनिट्स है। तो अगर वो यूनिट्स मुझे आपके डीमैट में देने हैं तो मुझे उस स्कीम के लिए आइजिन चाहिए। मैंने एनएससी के पास आइजिन के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। एंड जनवरी ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट रीचिंग आउट टू इन्वेस्टर्स to take their demat account details if they already have one. If they don't, I already work with Nuvama, who's my custodian, and Kotak, who's my custodian. It will be opening a demat account is a hours job, तो वो हो जाएगा. But let me clarify, we do not need any additional information from SEBI. Mandate is very clear. Demat account होना चाहिए हमारे लिए, यानी कि 500 करोड़ से कम AUM वालों के लिए मार्च 24 की डेडलाइन है। इसमें पास थ्रू तो नहीं इम्पैक्ट होगा सर? नहीं होगा ना सर, क्यों इम्पैक्ट होगा? वो तो सिर्फ आप सिर्फ यूनिट होल्डर हो। ओके, ओके, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, फाइन. Thank you, sir. Also, That, thank that you, is what Sandeep, something I was Sandeep sir. worried about. Thank you. So, thank you very much. In fact, Ajay, surprisingly, we had a lot of financial friends and their clients was also there. And it is a very healthy, direction where client also comes and understand what is the thought process, where your advisors or your financial friends are part of this discussion. So I, on behalf of Piper Serica, thank you all to all those clients, who has taken their valuable time to attend and this kind of seminars. And, we will keep organizing them. Educate yourself and please trust and depend only on your distributors, because it is their job and it is they are doing it very, very religiously. मैं आपको ये बता सकता हूँ, because I am, I represent to the industry body को भी मैं represent कर रहा हूँ अभी. So I can only tell you to all the investors who are there, just concentrate on your, आप अपना business पे concentrate करिए. Let the financial friends who are part of you at your process, let them take the decisions and let them do their job. Then don't try to overstep into each other's shoes. So thank you very much, everybody, and thank you all for being such a wonderful, listener and participant. Thank you, and we will see you soon with another set of a very interesting speaker very soon. Thank you so much. Thank you everybody. Thank you Ajay, and thank you everyone. Thank you. Good night. Thank you. Good night. Thank you, everyone. Thank you. Good night. Thank you, team.